Yes. So, hello everyone. Very good evening to all of you guys. So, let's start control system Maha revision, and here we will discuss the complete subject revision with all the concepts as well as good problems. So, first of all, can you please confirm audio and video, guys, so that we can start the class? Audio and video, guys, so that we can start the class. Yes. Good evening, Gauri. Chale, guys. So I think audio video is crystal clear. Now let's start today's class, guys. First of all, this session is equally important for ECE electrical iron. Okay, so let's have a discussion on the weightage of this subject. If you are preparing for the GATE exam, then what is the biggest motivation? This control system subject is having the weightage around 8 to 11 marks for ECE electrical iron. तो अगर आप इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हो, so once you will prepare, if you are well prepared for this control system subject, then definitely there is a high chance that you can score full out of full marks in this particular subject, because the beauty of this subject, mathematical subject, procedure based questions are there. If you like mathematics, then definitely you can score well in this subject. So for the ECE, the weightage of this subject is around 7 to 10 marks. For EE, the weightage is around for EE, the weightage is around 9 to 11 marks, and for instrumentation, the weightage is around 8 to 10 marks or 11 marks. I thought, yes, beta. Yes, Rishi. Good evening to all of you guys. So, let's start the session. So, ECE electrical iron ke liye, these all are the weightages, my dear students. Now, if I talk about the syllabus of control system, then these all are the chapters that we are going to discuss in today's session. Because this is a part 1, so we will discuss basics of control system, time domain analysis and stability in time domain. First, in the chapter number 1, we'll discuss about the transfer function, block diagram, algebra, SFG and sensitivity concepts. And the second is transient, steady state. And in the time domain analysis, stability in time domain, we'll discuss about RH and root locus. So this is all dedicated for today's class, and tomorrow evening we will discuss this entire frequency domain, compensator and industrial controller and state variable analysis. Okay dear students, चलिए. So एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो. आई थिंक आपने पहले कंफर्म कर दिया. नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन. सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, if you talk about control system, if you want to control any device or any system, then student, अगर हम बात करें, suppose that if I talk about control system, what is the a system, if you are unable to control the system now, then you cannot get the desired output from the system. Okay, so if I'm taking the simple example of a fan, okay, so in a fan, if I will remove the blades, what is system, sir? System is meaningful interconnection of physical devices or components. It means all the components are arranged in a meaningful order to become a system, and for system will take the input and will provide the output. The output should be in a organized way. System should provide the proper output. Okay, so if I will tell the example of a fan, if I will remove the blade in the fan, but we have the power supply, then don't you think if we don't have a proper airflow? So it means a fan without blade is not working as a system, but a fan with 3 or 4 blade. Now if I have power supply, then definitely there will be a airflow, so it is working as a system, but it is still not working as a control system, because if a fan with blade with regulator, if I will connect regulator as well, then I can control the airflow according to my requirement by using the regulator. So a fan with blade with regulator will become a control system. So a system which is controllable either by manually or automatically, okay, is known as control system. What is the today's requirement of industry? We want to reduce the human operation from the system behavior. So we want the automatic. Okay, so यहाँ पे देख सकते हो आप a human or a
here we are having a manual control. So a person want to take bath and just want to fulfill the requirement of hot water and cold water. So here there is a human operation involved. Here we just remove the human operation by connecting a temperature controller. So what is the today's requirement of industry? Control system subject is mentioned for EC electrical iron. Why? Because all the electronics gadgets that we are used in as in our daily life, all the electronics instruments that used in the industry, all the electrical machines, okay, instruments in the factories must be controllable, because without control we cannot get the desired output. If you cannot control your AC according to your requirement, then system is useless. So to change the output or to change the behavior of the system output according to our requirement, the system must be controllable. Is this clear, beta? Is this clear? Okay, thank you so much, beta. Thank you so much for your lovely words. Chali. So now student, this is all about the basics of control system. So as I already told you, control system is related to each and every aspect of our daily life, from hair dryer to UAV, unmanned aerial vehicle. We have the applications of a control system. So now coming to the part, control system is having how many components? So for the control system, we are having a controller here that will for the controller, the input signal is nothing but the error signal. The output, it will provide the control signal. Actuator is a device that is used to convert control signal to power signal that will implement to system plant process. And here we are having the actual output, and here we are having the input. Now student, as far as control system is concerned, what is your input signal? As far as control system is concerned, or input signal is nothing but the desired output. Let me take the example of AC. Student, suppose करो आपके घर पे, if you have a two AC in two different room, and suppose करो कि दोनों ही AC को, है ना, for both the AC we just provide the input, okay, 22-degree temperature. We want to set 22-degree temperature from AC. So how to control? Tell me guys, how to control? You can reply in the chat box also. If you are listening the class, you can reply in the chat box as well. If you wish to set temperature 22 in your AC, how to set the temperature? So sir, of course, as far as control is concerned, we provide the input from the remote control. So from the remote control, what we are providing? 22. Or what you want from the device? आप AC से क्या चाहते हो? Sir, we want from the AC that AC should start cooling at 22. But do you really think that it should start, or it will start immediately work on 22-degree temperature? No sir, it will not start immediately. It will take some time, sir. That particular time period is known as, my dear student, transient response, and after that steady state response come into picture. So for the any system behavior, practically we are having two types of response, transient as well as steady state. Let me, okay, so if I will draw the diagram for you, transient and steady state. So here we are having, so this is nothing but the transient behavior, and after that the steady state will come into picture. And after that the steady state will come into picture. Is it clear, beta? Yes. So now student, you can see here. So this first behavior, first part of the response is known as transient response. Is known as transient state response. Transient response or transient state response. Okay. So let me take this color here. And here after transient state, guys, here we will have the steady state response. Here we will have what? Steady state response. So अगर हम बेसिक्स की बात करें, कोई आपसे इंटरव्यू में ये पूछ सकता है कि as far as control system is concerned, what is the input signal? So student, as far as input signal is concerned, control system के अंदर input क्या होने वाला है? Desired output, because whatever we want from the system, we need to provide as the input as far as control is concerned. Is it clear? एक बार जरा कमेंट करते जाइए फटाफट से. गुड इवनिंग सलमान, गुड इवनिंग. चलिए, ऑल ऑफ यू गाइस. सो स्टूडेंट, कंट्रोल सिस्टम के अंदर इनपुट सिग्नल इज नथिंग बट द डिजायर्ड आउटपुट, एंड if the actual output follow the input signal, it means the system is stable condition. Is it clear? So for the ideal system, your actual output should follow the desired output, and desired output is nothing but what? Input signal only. Is this clear? So control system के अंदर
जो इनपुट होता है और इनपुट जो होता है which is nothing but the desired output. Now dear student, when your if your actual output does not exactly follow the desired output, then only there will be a possibility of error, and which is known as steady state error. We are not supposed to calculate error in the transient part. Once the system settle down, once the response settle, after that we can calculate the error, and that is why the error is known as steady state error. Is this clear? So steady state error shows that how far your actual output from the desired output. आपका एक्चुअल आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट से कितना दूर है, ये कौन बताएगा? ये आपको स्टेडी स्टेट एरर बताएगा. इज इट क्लियर? और if steady state error is 0, then your actual output is exactly equal to the desired output. Suppose karo we have set the temperature 22 and we have noted that after 1 minute or after 2 minutes the AC exactly working on 22 degree temperature. It means the AC working in the ideal condition and it is accurately working, so there is a 0 error in the system. Now dear student, again I am telling you, steady state error is generated if and only if the actual output does not exactly match with the desired output. Now again the second concept that examiner can ask, कि from the transient response, suppose karo we have a 2 AC in different room, so we have noted that one AC start cooling in 1 minute and other AC start cooling at 22 in 3 minutes. So we can say that कि for the AC which will take only 1 minute now, that is having quick response actually. So it means this particular transient response time, if it is less now, then the system response is we can say that system will having a quick response. System का speed बढ़ जाने वाला है. Is it clear beta? So transient response gives an indication about speed of a response, whereas the steady state response gives an indication about accuracy of a system. System is how much accurate, that we can comment by observing the steady state response, and system is how much fast, okay, whether the system is having the system is sluggish, slow है या उसका system का quick response है, that we can identify by observing the transient response. Is this crystal clear beta? Yes. So अभी तक हमने basics fundamental की अगर बात करें introduction का, so for any control system the input signal is nothing but the desired output. Transient state gives an indication about speed of the system, whereas that we can say that the next part, whereas the steady state response gives an indication about the accuracy of a system. ये हमने basics के बारे में बात किया. Now student, coming to the configuration. For a control system we are having open loop configuration and closed loop configuration. Is this clear? Sir, please complete each topic. Yes beta, yes. So student, as it is mentioned in the slide or thumbnail also, we are providing here complete mega marathon, or where we will try to cover the complete revision of the subjects. Okay, we already planned a dedicated series for the PYQs. Okay, so after completion of the Maha revision, we will start the PYQ series of control system. In the PYQ series, we will discuss all the top PYQs of control system together. But here the purpose of today's session is what? To recall the concept. Okay, agar aapne, if you already studied this subject, then you have opportunity to recall all the concept here. And if even you have not studied, please try to listen carefully, and if you wish you can also write down parallelly. Or suppose that if in parallelly you are unable to write, then in future also you can write recording में भी आप देख के अपने notes को बना सकते हो. But as far as live session is concerned, you need to try to listen carefully and try to respond quickly in the chat box. Is this clear beta? All of you are guys with me? Yes. So now student, if I talk about the control system configuration, control system divide into two parts, open loop and closed loop. Okay. Now student, if I talk about the open loop control system, in the open loop control system, controller action is totally independent to the actual output. Okay, so it means actual output में क्या हो रहा है वो controller को कभी पता नहीं चलेगा, because we don't have any feedback. So in the open loop system we don't have feedback. In closed loop system we are having a feedback, and feedback is also connecting to the controller. Is it clear? कभी कभी क्या होगा, फीडबैक है बट फीडबैक कनेक्ट नहीं है मतलब वो स्टिल working as an open loop system only. So for the open loop system there is no feedback, so controller action is totally independent to the
actual output. It means whatever is happening at the actual output, even the controller don't know. Here you can say that, here you can see the bucket and here is the tap of water. So directly water is coming, guys, even water is overflowing, but the water is continuously coming and coming because this tap of water को कभी ये पता नहीं चलेगा कि पानी बाहर जा रहा है. It means there is no information, there is no feedback, sir. Are you getting my point? So open loop system. Now student, tell me here what we have did. We just connected a level sensor here which will sense the level of water, and after that it will inform to this so tap of water. So again the water going to stop here. Is this clear, beta? So it means for the closed loop system we are having a feedback, and the closed loop system, in the closed loop system we can say that the controller action is totally depends on the actual output. Whatever is happening at the actual output, that actual output information is provided by the feedback or sensor to the controller. Is it clear? So closed loop system की हम बात करेंगे, then we are having a H of S, G of S, उसके बारे में हम थोड़ा देर में बात करते हैं, standard. So this is all about the closed loop transfer function. Now student, which type of feedback will prefer in the control system? So of course in the control system we will prefer always negative feedback, because negative feedback provide us the error signal, and error signal shows that how far your actual output from desired output. अगर हम positive feedback use करेंगे then it will increase the gain value, it will decrease the stability. Okay, so here are the first conceptual question, conceptual topic from which we can expect some statement type of question in the gate, okay, or in the ECE. So many time questions already has been framed. Is this clear, beta? Sir, class कितने देर तक चलेगा? So Ashutosh, today's we are having the class till 10:15 or 10:30. Okay, so class पूरा 4 घंटे चलने वाला है. This class है ना, पूरा 4 hour का class होने वाला है. Okay, बेटा? I solved all the questions of control signal digital, full marks and because of you only, sir. Thank you so much. Thank you so much for your lovely words, beta. Thank you so much. Okay. Now coming to this part, as I already told you guys, please try to respond quickly, है ना, all of you, है ना. You should also sit in a proper place. अच्छे से टेबल कुर्सी पे अपने बैठ जाइए और try to listen carefully, and let's discuss all the topics of control system one by one. Okay, so if I talk about the negative feedback, positive feedback, as I already told you, in the negative feedback gain decreases, okay, but the stability improve. So in the negative feedback your gain value going to be decreased. Let me take red pen here. Okay, so for the gain value decrease in the negative feedback, but for positive feedback it is increasing. Is it clear? Now negative feedback improve the stability. That is the best advantage of a negative feedback. So while designing any control system, will always prefer negative feedback or positive feedback, because negative feedback only provide us the error signal. Are you getting my point, beta? Is this clear or not? Yes or no? Now what is the rule of feedback or sensor? Feedback or sensor provide the information of actual output. Whatever is happening at the actual output, that information is provided by the sensor or feedback. Is this clear? Now stability increases by the negative feedback. So positive feedback, your stability going to be decreases. Now student, speed. As the transient response also affect. So in the negative response, your speed slightly increases. Your speed is going to be increased. So your positive feedback speed going to be decreases. Now of course for the time constant. Student, for the time constant, for the rise time, if the speed is increasing, then transient response is decreasing now. So time constant decreasing, rise time decreasing. Yes or no, guys? And time and frequency reciprocal, time and bandwidth जो है reciprocal. Then for the negative feedback, your time constant going to be decreases. That will make the system speed increases, and because time constant decrease, your bandwidth value going to be increases. I hope this all clear to you guys. I hope this is all clear. It means we want to design a system that will be less sensitive toward the noise or disturbance. Are you getting my point, बेटा? हम ऐसा सिस्टम नहीं डिजाइन करना चाहते जो थोड़ा सा नॉइज के कारण अपने रिजल्ट में काफी ज्यादा चेंजेस कर दे. Are you getting my point? So it means if the system is less sensitive toward noise and disturbance, then that will be a good system actually. So this is all about. Now student, vice versa, just repeat, just उसका inverse और reverse वहां हो जाएगा. So for the positive feedback, your bandwidth going to be decreases.
your gain part going to be increases, your stability decreases, your speed decreases, hence your time constant increases, your sensitivity, positive feedback increases, and noise part also increase in the positive feedback. I am again telling you from this slide itself, sometime MSQ or even a statement question you can see in the engineering services pre-exam or gate exam. Are you guys with me till here, beta? All of you guys with me till here. Shall we go for next slide now? Yes. So now student, let's start the next topic, that is transfer function, the first important topic of our today's chapter number 1. Okay, so what is the transfer function, sir? So if I talk about the basic definition, transfer function is nothing but the Laplace transform of output, Laplace transform of output upon Laplace transform of input, Laplace transform of input. Okay, and the transfer function concept is applicable for the LTI system. What does the meaning of LTI? Linear time invariant system. Now student, always remember, as far as control system subject is concerned, we will always talk about causal system or causal signals. It means we will always talk about t equal to 0 plus region. We never talk negative values of time as far as control system is concerned. So always remember, in the control system word, start with the C alphabet. The C always remind you it is applicable for the causal systems. Are you getting my point? It means we always talk about t is greater than 0. Will not talk about t is less than 0. Is this clear, beta? Now, what does the meaning of linear? अच्छा, signals and system में anyway we'll discuss the properties linear, non-linear, variant, invariant and all. लेकिन यहाँ पे क्योंकि LTI का नाम आया है, तो let's have a quick discussion in the next 2 minutes. Linear means a system is said to be linear if it satisfies superposition as well as homogeneous property. What does the meaning of superposition? Superposition means if x1t input provided to this system and system provide the input y1t. For the same system, if I will provide the x2t input, it will give me the y2t output. For the same system, if I will provide the addition of x1t plus x2t, then it should give me y1t plus y2t. Then the system is said to be, or we can say that satisfy the superposition principle. अगर वो ऐसा output देता है तो वो superposition को satisfy करता है. And student, for the same system, if x1t input, output is y1t. If I will multiply with the constant value ax1t, then that constant multiplication should also reflect in the output. So this is known as homogeneous property. So a system is said to be linear if it satisfies homogeneous as well as superposition property together. Okay, अब इसको गेट के लिए कैसे आइडेंटिफाई करना है, that we will separately discuss in signals and system subject. And signals and system mega marathon we will have day after tomorrow, that is 26th January, Republic Day. है ना प्यारे बच्चों? तो रिपब्लिक डे पे होने वाला है हम लोगों के लिए. Is this clear, beta? Yes. I hope this is fine, guys. I hope this is crystal clear. Yes. Okay. So now student, if I talk about time invariant, a system is said to be time invariant if a system is said to be time invariant if its input and output characteristics does not change with time. It means, suppose करो कि if we have provided this type of input to this system and this system provide this nature of output, if I will provide the same input after t naught time, then output nature should not change. Are you getting my point? It means अगर आपने मॉर्निंग में 9 AM पे ये इनपुट दिया तो उसने आउटपुट ये दिया, अगर इवनिंग 9 PM पे भी सेम इनपुट दोगे तो आउटपुट का नेचर सेम होना चाहिए. आउटपुट शुड नॉट वेरी एज पर टाइम. Is this clear, beta? So a system is said to be time invariant if its input and output characteristics does not change with time. Is this clear? Clear, sir. Now student, if I talk about the standard test signals relations, okay, so impulse, step, ramp, parabolic. So we know that the running integration from minus infinity to t, impulse integration gives you step, step integration gives you ramp, ramp integration you will get parabolic, parabolic differentiation you will get as a ramp, ramp response differentiation you will get step response, step response differentiation you will get the impulse response.
Is this clear बेटा? So पहला first concept from the transfer function क्या बन सकता है? Transfer function is nothing but the basic revision की अगर हम बात करें, so transfer function is nothing but the Laplace transform of impulse response. Why, sir? Because what is the transfer function, sir? Sir, transfer function is nothing but Laplace of output Laplace upon input Laplace. And as far as impulse response is concerned, impulse input के लिए बताइए बच्चों, अगर मेरा del t impulse input है तो इसका Laplace transform क्या हो जाएगा? The Laplace transform is nothing but 1, sir. So if this is my input signal R of t, then my R of s is nothing but 1. So it means if अगर RS 1 हो गया तो ये क्या हो गया? CS upon 1, and something upon 1 is always something only. It means, don't you think कि transfer function is nothing but Laplace transform of CT, and CT is nothing but impulse response. Are you getting my point? So what we can write here? We can write Laplace transform of impulse response. So similarly, guys, if I will make a table for the transfer function from which we can expect a 1 marks question, okay? So you can write here the transfer function is nothing but the Laplace transform of impulse response. At the same time, if step response is given, then we can say that transfer function is nothing but S into Laplace transform of step response. S into Laplace transform of step response. We can also say that the transfer function is nothing but the S square into Laplace transform of ramp response. And guys, we can also say that the transfer function is nothing but S cube into Laplace transform of parabolic response. So this table is very much important. Okay. Yes. So I think Rishi is saying something. Yes, Rishi beta, yes. So I am also taking the classes here also, and I am also taking the classes there also. Okay, beta. So don't worry and ask the transfer function. So you just need to take CS upon RS. Sometime examiner can give you transfer function, examiner can give you input RS, and examiner can ask CS value or CT value. Okay, so this is a simple partial fraction and inverse Laplace transform you need to do in the first pattern of questions. Is it clear? So first of all, we should know the basics of transfer function. So if I talk about the standard open loop transfer function, so open loop transfer function is nothing but what, guys? G of s. Now if I talk about the standard closed loop transfer function, then we can say that, so if I talk about the standard closed loop transfer function, negative feedback, and if we are having a G of s here, if we will have here G of s and here H of s, G of s, H of s, then the standard characteristics equation or closed loop transfer function is what, guys? CLTF. So standard CLTF is nothing but G of s upon 1 plus G of s, H of s, where G of s is representing the forward path parameter and H of s representing the feedback path parameter, and this is nothing but the negative feedback. This is clear, beta? Now, in general, if we are having a unity feedback here, then of course your closed loop transfer function CLTF you can write as a GA upon 1 plus G as well. Okay, so sometime as far as problems are concerned, we will not always say GS upon 1 plus GS HS. We need to just minimize the expression G upon 1 plus G if your feedback H value is what? 1. Is this clear? And we can also apply as a short trick sometime if unity feedback system is there. If UFB, unity feedback system is there, it means if HS equal to 1 and if my OLTF, let me take next slide, if your OLTF, what is your open loop transfer function? G of s. So student, if I am considering GS value is nothing but N of s upon D of s. So what is the OL poles and OL zeros? So the roots of denominator for the open loop transfer function will gives you what, guys? Open loop poles. So this will give you what? Open loop poles, and the roots of numerator of the OLTF will give you zeros of OLTF, or you can also say that OL zeros. Clear, sir. Now student, tell me, if it is noted that we are having a unity feedback H of s equal to 1, and then what is directly CLTF? So CLTF standard value is nothing but GS upon 1 plus G of s, H of s. And if H of s equal to 1
and if I will directly put the value of ns upon ds here, then what we will get? We will get ns upon ds upon 1 plus ns upon ds only. एंड एच तो कितना है? 1 ही है. तो आफ्टर एलसीएम फाइनल एक्सप्रेशन कितना आ गया? फाइनल एक्सप्रेशन इज नथिंग बट ns अपॉन d of s plus n of s, where ns is representing the numerator of OLTF and ds is representing the denominator of OLTF. Is this clear? So what is the amazing short trick now? Short trick is what? कि अगर इस बॉक्स के अंदर हम short trick बना दें हम फाइनली, वो short trick आया कैसे वो मैंने यहाँ बताया. Now what is the short trick for the gate, particular gate questions? तो अगर if examiner can will frame a question from the transfer function topic, basic transfer function, then the weightage should be 1 marks because it is very easy concept guys. Okay? Yes sir, PSU के लिए okay बेटा सब कुछ आएगा अभी, है ना. आप कुछ और भी शायद कुछ पूछ रहे हो, मैं सब कुछ डाउट्स लूंगा. थोड़ा सा हमारा फ्लो को ब्रेक नहीं करते हैं और एक बार हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे फटाफट फ्लो बना लेते हैं. ओके बेटा, चलिए. So student, if the unity feedback system is there, if hs equal to 1, then OLTF is represented by ns upon ds, और अगर मैं शॉर्ट में लिखूं n upon d, then directly CLTF क्या हो जाएगा? Directly CLTF is nothing but n upon d plus n, n upon d plus n. And if suppose करो, if CLTF is given to you, if directly CLTF is given but unity feedback n upon d plus n is given to you, and if hs equal to 1, h equal to 1, and if examiner will ask the OLTF, then how to find OLTF from CLTF? OLTF stands for open loop transfer function, CLTF closed loop transfer function, very basic. So tell me, sir, OLTF means n upon d only. So here I am available with, or this expression already given to me, n upon d plus n. What should I do with this so that I will get only n by d? So in denominator I should subtract n, sir. So it means I should write here n upon d plus n, which is nothing but working as a CLTF. So in the ultimate CLTF, if I will subtract the numerator in ultimate denominator of CLTF, then n get cancelled and I will get finally what? N by d. So this is nothing but OLTF to CLTF and this is nothing but CLTF to OLTF. Is it clear बच्चा? अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, let me take one example. सपोज करो स्टूडेंट कि अगर आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऐसा कुछ दिया है 4 अपॉन s इंटू s प्लस 1 इंटू s प्लस 2, ओके, एंड hs इक्वल टू 1 दिया है आपको, तो कैन यू डायरेक्टली फाइंड CLTF? क्या आप 2 सेकंड में CLTF बताओगे? अरे 2 सेकंड में CLTF बताओगे क्या? बोलो हाँ या ना, ऐसा बताएंगे ना. कैसे बताएंगे सर CLTF 2 सेकंड? कैसे बताएंगे? चलो 5 सेकंड बताओ. चलो 5 सेकंड. n अपॉन d प्लस n, सर ये रहा n अपॉन 4 अपॉन d प्लस n, ये एंटायर टर्म यहाँ आ जाएगा, s इंटू s प्लस 1, s प्लस 2 और प्लस 4, ये हो गया. फिनिश सर, फिनिश. तो एक नॉर्मल स्टूडेंट जो ये लिख रहा है GS अपॉन 1 प्लस GS HS, ये लिखने का नीड नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? आर यू ऑल गाइज विथ मी? n अपॉन d प्लस n, दिस इज द ब्यूटी ऑफ n अपॉन d प्लस n. और थोड़ा सा अगर मैथमेटिक्स अच्छा आता है, डायरेक्टली CLTF क्या ऐसा बोल सकते हैं? ये ओपन द ब्रैकेट, सो s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, सो अल्टीमेटली इट शुड बी s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4. दिस इज माय CLTF. I hope you guys getting my point. Yes or no बेटा? And similarly अगर CLTF given है तो OLTF निकाल देंगे. In the ultimate denominator will subtract the numerator 4 minus 4. Is it clear? डायरेक्ट वापस OLTF आ जाएगा. ठीक है, तो ये basics type of question. This is all about the closed loop control system we already discussed. Now student, sometime examiner can ask the DC gain also. What is the DC gain, sir? So student, to calculate the DC gain, we can put s equal to 0 in the transfer function, but we need to take care and we need to ignore or neglect the poles and 0 at origin. This is very important. Or the conventional approach to find out the DC gain, we need to convert the transfer function, we need to convert the ultimate transfer function into time constant form. It means जो भी constant part है, whatever is constant term is given in the transfer function, we need to take outside. Let me take the example कि how to calculate the DC gain. First of all, what examiner is saying, the open loop control system results in a response of this. Okay, अच्छा देखो, ये हमारा पहला क्वेश्चन है. एग्जामिनर क्या बोल रहे हैं कि for the unit impulse input, first of all, in this question there is no information about feedback. So student, whatever system is given to you, you just need to consider as a CS upon RS. Okay, so till this full stop, this is the response is given to you and this is the unit impulse input. So if I will find the transfer function,
then what will be the transfer function? CS upon RS. Because of impulse input, my RS value is 1. So don't you think CS upon 1, RS तो 1 ही हो गया sir, RS तो 1 ही हो गया. So it means I need to take the Laplace transform of this entire expression. So what is the Laplace of sin 5t? 5 upon s square plus 25. But if e to the, when you will open the bracket, so e to the power minus 2t providing the frequency shifting. So what it will be? It will be sir 5 upon s plus 2 का whole square, s plus 2 का whole square plus 25. Are you guys agree with me? Plus. Now student, if e to the power minus 2t multiply with cos 5t, then this time again frequency shifting carry opposite sign because e to the power minus 2t. So in the Laplace it will be represented as a s plus 2. So in the numerator we are having s plus 2 upon, here we should write s plus 2 ka whole square plus 25. Now student, examiner is asking for the DC gain of the transfer function. So first of all, can you please take the LCM? Yes sir. So open the bracket, s square plus 4s plus a plus b ka whole square plus 25, and here s 5 or s plus 2, so it will be s plus 7 only. Is this clear, beta? So what you will get finally, you will get s plus 7 upon s square plus 4s as it is sir, and 25 plus 4 is nothing but 29. बोलो प्यारे बच्चों हाँ या ना? यहाँ तक की बात क्लियर है क्या आपको? All of you guys do reply fast. Is this crystal clear to everyone? Now tell me guys, if this is your OLT, if this is your final transfer function, जो भी हमको open loop दिया था, क्योंकि कोई feedback information नहीं है, तो हमने CS upon RS देखा. Now examiner want us to find DC gain. How to calculate DC gain? Student, to calculate the DC gain, we need to take the constant part outside. It means from the numerator 7 should come outside, and from denominator 29 should come outside. So ultimate answer is 7 by 29 only. Sir, what is the trick? Trick is nothing but to find the DC gain from any transfer function, we can directly put s equal to 0, but we need to neglect poles and 0 at origin. This last line is very important. अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप s को 0 करोगे तो DC गेन निकाल सकते हैं ना, yes or no? तो किसी स्टूडेंट का अगर आंसर आए तो रिप्लाई करे. What is the DC gain in this question? What will be the DC gain in this question, प्यारे बच्चों? So you will reply the DC gain is nothing but 7 upon 29. So you will reply the DC gain is nothing but 7 upon 29. जो भी कैलकुलेट करोगे वो आंसर आपको यहाँ टाइप कर देना है. This is the very basic question. Examiner can ask कि transfer function given to you, okay? Or suppose that a unit step response is given to you. Examiner can say that a unit step response is given to you, that is tan into 1 minus e to the power minus 2t. And examiner can ask कि find transfer function. Examiner can ask find transfer function. अब देखो ये गेट क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंटेशन, ये गेट क्वेश्चन है जो लिखा मैंने एज एग्जांपल. ये गेट क्वेश्चन में आया हुआ 2 नंबर में. अब आप बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, कितना टाइम लगेगा इसको करने में? क्या ऐसे क्वेश्चन को हवा में उड़ा सकते हो? Can you solve such type of question without touching notebook and pen? Because unit step response means input is given to me. What is because of unit step, your RS value should be 1 by S. Okay sir, okay, crystal clear. Now CT value is also given to us. Okay sir, okay, definitely. Now tell me, if I will take the Laplace of CT, I should get CS. What is the Laplace of this? It should be sir tan upon S minus ka tan upon S plus 2. If I am looking for transfer function, I just need to take the ratio of CS upon RS. बोलो बच्चों कितना आसान है यार, CS upon RS. CS upon RS, very very easy sir. Can I take LCM here? Can I take LCM? Yes sir, S into S plus 2. So when you will take the LCM, you should write tan into S plus 2 minus ka tan into S. So student, just open the bracket and cancel also. So you will get what? Tell me. What you will get? Come on. Sir, we'll get here tan S, और tan S तो get cancel, और tan into ये 20 हो जाएगा क्या? 20 upon S into S plus 2 sir. And this is CS upon RS करना है 1 by S, तो ये SS cancel हो जाएगा. Are you guys getting my point? All of you guys with me or not? All of you guys with me? Just do reply fast. Till now everything is clear. 20 upon किसने लिखा? देखो I am very happy. I am very happy for those. हर्षित हो जा, क्या बात. जैसे हर्षित, all of you should follow Harshit है ना? The way Harshit is replying, I want other students should also respond like him. Other students should also respond like him. Are you guys all with me? बोलो yes or no? First pattern of question कितना आसान है? अरे कितना आसान है? Yes sir, बड़ा ही आसान है. उससे आसान क्या होगा? ये second pattern of question. The second pattern of question, examiner can give you
So student, just listen carefully the statement. Okay, the transfer function of a unity feedback system. Examiner has given us the transfer function of a unity feedback system is this s plus 4 upon s square plus 6s plus 25. Suppose karo this is the transfer function of a unity feedback system. Now what examiner is asking? Find the DC gain of or examiner can ask find the open loop DC gain. Find open loop DC gain. Can you find, guys? Find open loop DC gain. बताओ यार फटाफट से. Can you find the open loop DC gain for me for this question? Can you find DC gain? अच्छा देखो, मैं अगेन आपको बता दूं, फॉर दिस सेशन विल ट्राई टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट, कंप्लीट रिवीजन. अगर आपको लगता है कि सर हमको पीवाईक्यूज करने हैं तो डोंट वरी, पीवाईक्यूज का सेशन आई एम ओनली गोइंग टू टेक फॉर द कंट्रोल एंड सिग्नल्स. ओके, सो डोंट वरी, वी विल हैव सो मेनी पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस में. आज वाले सेशन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं सारे. सो टुडे क्लास इज डेडिकेटेड फॉर चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे 4, 5, 6. ओके, सो बताइए इसका आंसर फटाफट से. व्हाट इज द डीसी गेन? व्हाट इज द ओपन लूप डीसी गेन? अब देखो कुछ बच्चे डायरेक्टली एस को 0 कर देगा तो 4/25 आ जाएगा. अब बताओ, ये एग्जांपल लिया है मैंने आपको एग्जांपल, तो आप बोलोगे सर 4/25 करेक्ट आंसर है क्या? बोलो हाँ या ना. नो सर नो, 4/21. हर्षित क्या बात है क्या. So student, if I talk about because of unity feedback system given, it means HS equal to 1 given, and if HS equal to 1 given to you, then from this is actually working as a CLTF, and if it is CLTF, then from CLTF can we find OLTF directly? How to find? N upon D plus N minus N. So what is N? N is nothing but S plus 4 upon what is D? N plus D. N plus D is nothing but S square plus 6s plus 25, and minus what we need to do? We need to do this s plus 4, sir. The final transfer function OLTF is look like this, s plus 4 upon s square plus 6 of s minus ka s, is it 5s? Yes sir, 5s. And 25 minus 4 is 21. So now this is the open loop transfer function. So if you are able to find OLTF, now after that you can put s equal to 0 to find DC gain of OLTF. So open loop DC gain is nothing but 4/21. Open loop DC gain is nothing but 4/21. I hope this is crystal clear, प्यारे बच्चों. I hope this is crystal clear. We need PYQs. Definitely better, definitely. That is why I am telling you कि previous year gate PYQs के लिए we also planned a dedicated series. जैसा कि हमने last launch में बताया था आपको. This session is for complete revision, and in the next session we'll discuss the all PYQs of control systems. Okay. However, यहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी कुछ PYQs हम ले सकते हैं, कुछ PYQ just for the कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसके लिए. बाकी एक कंप्लीट डेडिकेटेड PYQs का सेशन भी होने वाला है जहां आपको केवल PYQs ही कराए जाएंगे. जहां ये सारे कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में जो मैंने बताया थ्योरेटिकल पार्ट ये सब नहीं होगा, वहां पे केवल PYQs कराए जाएंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? चलिए तो फटाफट से, इफ द ट्रांसफर फंक्शन फॉर द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. अब बताइए कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का अगर ट्रांसफर फंक्शन लिखना है देन वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. सो लेट मी टेक द एग्जांपल. सपोज दैट स्टूडेंट, इफ वी आर हैविंग दिस low pass filter, can you find out the transfer function? So for the electrical network, can we find the transfer function simply? Yes sir, this is V0S and this is R, this is 1 by CS. So here directly we can apply voltage division rule and we can find, or you can apply the KVL as well, IS, yes or no? So this is a very simple question. Can you directly find out? Yes sir. So V0S, if we are looking for transfer function means we are looking for the ratio of V0S and VIS, question mark. So how to find? V0S is nothing but VIS into 1 upon CS upon R plus 1 by CS. I hope you are getting my point, beta. So it means what is V0S upon VIS? So V0S upon VIS is nothing but, sir, 1 upon CS upon RCS plus 1 upon CS, and CS get cancelled. So the final answer is nothing but 1 upon 1 plus RCS.
1 upon 1 plus RCS, where RC is nothing but the time constant. So this is the standard first order system. Very good, Harshit. Very nice. Very nice. Is it clear? Yes. So if you guys clear with this, can you please solve this problem for me? Can you please solve this problem for me quickly? Let me check how many of you are able to solve this. So student, I am giving you a hint. First of all, don't put the values like 10 kilo, 100 microfarad. No, you need to consider first of all as a R or C, and after doing all the LCM, you can put the final value in the last expression to save the time. Are you getting my point, beta, all of you? So tell me how to. So sir, this is capacitor 100 microfarad, 100 microfarad. Both the capacitors are having the same value. It means, shall we say that it is 1 upon CS? And here also we are having 1 upon CS and R only. So what will be your output V2S? So you will say that V2S is nothing but V1S dot R plus 1 upon CS upon we are having all the impedance. All the impedance means we can say that 1 upon CS plus R plus 1 upon CS. So what will be your V2S upon V1S transfer function? V2S upon V1S is nothing but, when you will take the LCM, will get 1 plus RCS upon, tell me guys, what you will get here? Don't you think you will get RCS plus 2? So 2 plus RCS. And student, we are looking for the transfer function. Now you can consider R value. What is R value? So you will say that, sir, R value is nothing but, you will reply कि सर R value तो 10 किलो ओम है. R का value कितना है प्यारे बच्चों? 10 किलो ओम. 10 किलो मतलब 10 into 10 की power 3, so it will give you 10 की power 4. What is the C value, sir? C value, sir, 100 microfarad. Micro means 10 to the power minus 6. It will give you 10 to the power minus 4. So if you will multiply R and C, so you will get 10 की power 4 into 10 की power minus 4. Hence you will get 1 only. It means यहाँ पे जो ये RC है ना, ये 1 है. RC multiple 1 है. It means the final expression is nothing but S plus 1 upon S plus 2. Hence correct answer is option number D for Delhi. प्यारे बच्चों, क्या correct answer D for Delhi आ रहा है क्या इसका? Are you guys all agree with me? Please do reply. सभी लोग reply करेंगे तो मजा आएगा. ये हुई ना बात हर्षित, शाबाश. बाकी लोग भी reply करो भाई, बाकी लोग भी reply करो. Yes. तो देखो problems भी आना start हो गया है धीरे धीरे. We'll have lots of problems discussion also. Okay. So S plus 1 upon S plus 2. Now students, suppose that standard circuit जो हम classroom के अंदर देखते हैं, because यहाँ पे revision की बात हो रही है, so एक बार हम final short trick भी discuss कर लेते हैं. Suppose that if electrical network is like this, अगर electrical network कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह, अगर आपका electrical network है Z1, Z2, Z3, Z representing impedance here, okay, Z4, then we will have a short trick here, okay. How the short trick we can generate? Simply by applying the KVL, okay. So we know network से हम डायरेक्ट कर सकते हैं सर. यहाँ पे अगर V0S है, यहाँ पे अगर VIS है, and if you are directly looking for the transfer function V0S upon VIS, then how to find, guys? So the short trick says that if I will consider current here I1S, I2S, I can solve it, okay. I can do the derivation also, but it will take 10 to 15 minute time. So because we are having a quick revision here, तो फटाफट से अगर रिकॉल कर ले, तो जब भी ऐसा कुछ दिख जाए ट्रांसफर, जब भी आपको अगर ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट दिख रहा है, an examiner is asking for the transfer function, so what is the short trick for the same? You can write in the numerator Z2 Z4 upon Z1 whole bracket Z2 plus Z3 plus Z4 plus Z2 as it is, and here we should write Z3 plus Z4. Yeah. Is this clear, bachcha? So this is nothing but the amazing short trick for the electrical network to find the transfer function if the transfer function or if the given electrical circuit satisfied this condition. मतलब ये कि सर एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल दूं तो अगर Z1, Z2, Z3 की जगह कुछ भी वैल्यूज हो सकते हैं, R हो सकता है, L हो सकता है, कैपेसिटेंस हो सकता है. So let me take the example here only. थोड़ा छोटा डायग्राम बनाऊं मैं. If I will make a very small diagram here, okay. So tell me guys, can you find out the transfer function fast for me? All of you please try to attend. Here we are having inductor, here also we are having resistance.
Okay, sir. This is my LS. This is my 1 by CS. This is my R1. This is my R2. Okay. And suppose that the values are also given to us. ये question है, छोटा question लिख रहा हूँ. R1 value is 1 ohm. Okay. R2 is 2 ohm. Okay. Inductor N value is 1 Henry. Capacitance value is also 1 farad. If these values are given to you, can you please directly find out the transfer function for me, बच्चों? क्या आप फाइनल ट्रांसफर फंक्शन V1 V2 upon V1 निकाल सकते हो क्या? Can you find V2 upon V1 directly for me? What is V2 upon V1 now finally? Finally, what is V2 upon V1 प्यारे बच्चों? Very nice. किसने लिखा है ये? शाबाश शाबाश. Now tell me what is the final expression. So Z2 Z4 means, sir, of course 1 by CS dot R2 upon Z1. Z1 value is what? R1, and Z2 plus Z3 plus Z4, it means 1 by CS plus LS or plus R2. And the next part is plus. What about the next? Z2? Z2 is 1 by CS and Z3 Z4 is nothing but LS plus R2. बस ये एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू पुट करना है. दैट इज नथिंग बट द आंसर. सो सी का वैल्यू 1 है, आर का वैल्यू कितना था? R2 का 2. तो क्या न्यूमरेटर में 2 by s आ गया क्या? अगर वैल्यू पुट कर रहे हो, then don't you think V2 upon V1 is nothing but R2 value is what बेटा? 2 upon C value 1 है, 2 upon S अपन बस वैल्यू पुट करते जाओ. R1 का वैल्यू 1 है सर, C का वैल्यू भी 1 है सर, तो ये 1 upon S आ गया. 1 upon S प्लस L का वैल्यू भी 1 है, R2 का वैल्यू 2 है सर ये, एंड प्लस अगेन 1 C का वैल्यू 1 है, 1 by S, एंड हियर इज L का वैल्यू 1 है, तो ये S प्लस 2, क्योंकि मैंने R2 का वैल्यू 2 लिया था. बस यही ट्रांसफर फंक्शन है, ये वाला. ये दिस इज नथिंग बट योर ट्रांसफर फंक्शन. फाइनली टेक द एलसीएम आल्सो. जब एलसीएम लोगे तो एस एस कट जाएगा. इज दिस क्लियर बेटा? शैल वी गो फॉर नेक्स्ट प्यारे बच्चों? अच्छा एक बार कंफर्म कर दो, ऑडियो क्लियर है ना? परफेक्टली क्लियर है? ऑडियो परफेक्टली क्लियर? ज्यादा वॉइस लाउड तो नहीं आ रहा? बहुत ज्यादा लाउड या बहुत ज्यादा धीरे तो नहीं आ रहा? वॉइस क्लियर है एकदम? एक बार क्रिस्टल क्लियर लिख दो, सीसी कर देंगे टाइप चैट बॉक्स में. इफ ऑडियो वीडियो क्रिस्टल क्लियर देन टाइप सीसी इन द चैट बॉक्स. इफ यू गाइस विथ मी टिल हियर देन टाइप सीसी इन द चैट बॉक्स. So student, if I talk about from the control system, बिल्कुल basics की बात अभी हम कर रहे हैं. Right now we are discussing so much basics part. Okay. So in the basics, if I talking about the next pattern of question, which is transfer function from differential equation. So student, we have to follow these 3 steps to find out the transfer function. Whenever any control system is represented by any differential equation, then the first step we need to take Laplace transform both sides, identify the outputs and input, and then finally take the ratio of Laplace of output and Laplace of inputs. So let's try to solve this question. This is the gate question actually. As I told you, some gate question I am taking here also to give you the flavor, to give you just the idea कि question कैसे बन सकते हैं. But अगर आपको बहुत सारे PYQs करने हैं, वो हम next upcoming sessions में dedicated session होगा पूरा 4 घंटे का. उसमें केवल और केवल PYQs एक के बाद एक के बाद एक के बाद PYQs ही आते जाएंगे. Is this clear? Is this clear बेटा? Yes sir. Now tell me यहाँ पे क्या? सर हियर द क्वेश्चन इज लुक लाइक कि स्प्रिंग है ये, लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? देखो आपको कंफ्यूज नहीं हो. समटाइम्स स्टूडेंट्स फील नर्वस बिकॉज सो मेनी लैंग्वेज आर गिवन टू स्टूडेंट. जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई कि व्हाट एग्जामिनर इज आस्किंग. सिंपली ट्रांसफर फंक्शन. you need to identify the output, identify the input. Output is x of s, input is f of s. Okay sir, okay. Now whenever any differential equation is given to us, to find the transfer function we need to take Laplace transform both side. जब भी कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए दोनों तरफ Laplace transform लेंगे. लो बच्चों, लो Laplace लो. So when you will take Laplace transform you should write m s square into x of s. अच्छा, one more thing, you should know the simple properties of Laplace guys. Okay, however हम signals पर discuss करेंगे सब कुछ, but I am expecting simple. Just like integration differentiation, you should also know dxt upon dt का Laplace क्या होगा? s x of s minus x0 भी होता है, but for the transfer function case initial values are 0. So shall we write here d into, tell me what, s into x of s and plus k into x of s. This is the easiest question ever sir. 1 mark, deserve 1 marks. It deserves 1 marks. ft Laplace is f of s. Now we have to take common in x of s. So if x of s take outside, so what will be left inside the bracket? Inside the bracket क्या आ गया? अरे जोर से बोलो. ms square plus ds plus k, and here is only f of s. Oh. Now what is the transfer function finally? Finally x of s upon f of s. Okay sir. मैं यहाँ लिखता हूँ कि here I have the space. So x of s upon f of s.
x of s upon f of s is nothing but, here we are having 1 upon ms square plus ds plus k. Now just substitute the value. We are left with the final value. Only just put the value of m 0.1, 2 and 10. The moment when you will put the value, you will get the final expression is nothing but 1 upon 0.1 s square plus 10 s, 2, d का value 2 है ना, तो 2s and plus k value is 10. The moment when you will take 0.1, अरे बच्चों डिनोमिनेटर में 0.1 को बाहर ले लो, ऊपर भेज दो, वो हो जाएगा 10 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 20s प्लस 100, 10 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 20s प्लस 100, एग्जैक्टली मैचिंग विद द ऑप्शन ए. आई थिंक किसी ने ऑप्शन ए लिखा भी होगा, शाबाश, वेरी गुड. ऑप्शन नंबर ए आपने लिख दिया पहले से ही. यस सर. Now all of you do reply. Shall we go for next? So now student, block diagram reduction technique. So let's have a discussion on the some basic rules of block diagrams. However, all the block diagram questions in the GATE exam we will solve by using the SFG only. But still, SFG से हम करेंगे. But अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्टली ब्लॉक डायग्राम के रूल पे ही पूछा जा रहा है 1 मार्क्स में, तो हम फटाफट से उसको कर सकते हैं ना. Yes or no guys? So let's have a discussion upon quickly some block diagram reduction. So whenever 2 or more blocks are in cascade or series, then we have to take the product. So G1, G2. Whenever 2 or more blocks are in parallel, then we have to check the sign here. If plus plus sign, then we are having G1 plus G2. Suppose that we are having minus sign here, then of course we will have G1 minus G2. Now the next rule is, whenever a takeoff point moving after a block, so whenever a takeoff point moving after a block, if I wish to shift this takeoff point moving after a block, then I have to divide whatever is mentioned in the box. Whatever gain is available inside the box, I need to divide in the branch, like just like this. Because now this is the old position of takeoff point. This point is nothing but takeoff point, guys, takeoff point. And now the new position of takeoff point is here. So whatever is gain, whatever gain के अंदर g था, तो हमने g का divide कर दिया 1 by g in this branch. Are you getting my point? So moving or shifting a takeoff point before the block. So whenever a takeoff point moving before a block, then we have to multiply. Then we have to multiply. अच्छा, जब हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की बात करते हैं तो एक एक चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ से x आ रहा है, यहाँ से वो आ रहा है. लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम क्विक रिवाइज कर रहे हैं, तो फटाफट एक्सप्रेशंस आपको मैं याद दिला देता हूँ फटाफट से, कि अगर आप हमारे क्लास को स्टूडेंट रहे हो तो ये शायद आपको पक्का याद होगा कि whenever a takeoff point moving after a block, then divide. Whenever a takeoff point moving before a block, then multiply. Now अगर आपको takeoff point क्लियर है तो समिंग पॉइंट में इसका उल्टा होने वाला है. In the summing point इसका उल्टा हो जाएगा. Yes or no guys? Reverse only. Reverse only means we can say that कि whenever a summing point or differencing point moving after a block, then we have to multiply. Summing point or differencing point moving after a block, then multiply inside. जो भी बॉक्स में रखा है उसको multiply करो जी. Whenever a summing point or differencing point moving before the block, then divide. Then what? 1 by g divide. Is this clear, beta? How to eliminate any feedback loop? Sir, if we are having a positive feedback, sir, then we should write g upon 1 minus gshs. Always remember, in the case of positive feedback, क्योंकि GATE examiner question पूछ सकता है ना? We in the practically we prefer negative feedback, but as far as questions is concerned, examiner can make a question on positive feedback as well. So for the positive feedback, the closed loop transfer function is nothing but gs upon 1 minus gshs. And for the negative feedback, the closed loop transfer function is nothing but gs upon 1 plus g of s h. I hope you guys clear with this. And my dear student, the closed loop pole equation is also known as characteristics equation of control system. So अगर कोई फ्यूचर में आपसे पूछ ले कि what is the characteristics equation of a control system, then the standard characteristics equation of a control system is 1 plus gshs equal to 0, and this equation will give us closed loop poles, and this equation is for negative feedback system. अगर मेरे को कोई पूछे कि what is the characteristics equation for a positive feedback system, then we will reply 1 minus gshs. Is this clear, beta? Yes, sir.
Now student, whenever two summing points are neighbor, then we can change their position. We can interchange their position irrespective to the inputs. मतलब यहाँ से A आ रहा था, ये B आ रहा था, तो इसको हमने इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया. That we can do. Similarly, if two takeoff points are neighbor, then we can interchange their position. Is this clear, beta? But what we never want this. This is a critical rule. We don't want to shift a takeoff point after a summing point. We don't want to shift a takeoff point after a summing point or to shift a takeoff point before a summing point. ये हम नहीं चाहते. Why? Because rather than simplifying our circuit, this operation make more complex our circuit. ये ऑपरेशन आपके सर्किट को और कॉम्प्लेक्स बना देगा. कैसे सब देखते हैं स्टूडेंट. यहां पे देखो, फ्रॉम दिस इफ आई विश टू शिफ्ट दिस टेको पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, तो यहां से मेरे को टेको पॉइंट से क्या सिग्नल मिल रहा है. फ्रॉम द टेको पॉइंट आई एम गेटिंग एक्स ओनली. If I will shift the take-off point after this summing point, then after this summing point, this is the new position. This is the new position of take-off point. This is the old position. This is the old position. Now tell me, from here x and here अगर मैं यहाँ पे एक साइन लेता हूँ plus sign, then here I am getting x plus y. Just to understand you, I am taking plus sign x plus y. But what is my requirement from the take-off point? Sir, I want x only from take-off point. But here I am getting x plus y from take-off point. So it means I need to remove y. So it means here whatever operation I just took here plus, then I need to take minus here. क्योंकि अगर यहाँ से x plus y आ रहा है, and again if y will subtract, then I will get x here. It means if you will shift or move a take-off point after a summing point or before a summing point, then you need to add one extra summing point or differencing point, and that will make your block diagram more complex. Rather than simplification, this step will make your diagram more complex. Are you getting my point, beta? चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन जरा करके बताइए. However, the same question we can do by using the SFG only. और गेट में आएगा तो SFG से ही करेंगे. But just for the interest, अगर मैं थोड़ा सा आपको बोलूं कि ब्लॉक डायग्राम से करके बताओ, उसके बाद हम SFG पे आने वाले हैं, क्योंकि that is the only important for गेट, है ना. तो बताओ फटाफट से ऐसा इसको ब्लॉक डायग्राम से कैसे करोगे. How you will solve by using the block diagram? So sir, some student may think, sir, can we shift this take-off point after a block? Yes sir, this can be a one way. The second way, sir, can we shift this take-off point before the block? Yes sir, we can do. So both the method, whichever method you like, you can follow. After two steps, you will get the answer for sure. After two steps, you will get the answer for sure. Are you guys getting my point? Are you all guys getting my point? बोलो हाँ या ना. Till now you are with me. So suppose करो, if I will shift the take-off point after a block, so अगर मैं new diagram बनाऊँ यहाँ, if I will shift this take-off point, so whenever take-off point moving after a block, then divide. किसका divide? जो भी box में रखा है उसका divide करना पड़ेगा सर. It means shall we say that कि circuit diagram कुछ ऐसा बनेगा, logic जो block diagram है, it will represent like this plus minus, and this is G1 as it is. This G1 will be as it is, sir. And this take-off point moving after a block. So it means divide. So in this branch we need to divide, okay? In this branch we need to divide. So we need to write 1 upon G1, yes or no? And this box is as it is coming, this box is as it is coming. And here also we are having plus plus sign. We are having plus plus sign. Come on guys, yes or no? So tell me here this is 1, this is also 1. So what is the first loop? This is the feedback loop, guys. So when you will simplify this loop, you will get G1 upon 1 plus G1. You should get G1 upon 1 plus G1. This is the box, sir. And it should be in the cascade with this. What is this? Here two branches are in parallel. Parallel matlab you can write 1 upon 1 plus G1. So finally when you will take the LCM, the numerator and denominator part get cancelled. Because यहाँ क्या मिलेगा? G1 upon 1 plus G1 as it is, sir. And multiply में. Here we should write, sir, G1 plus 1 upon G1. So don't you think everything is cancelled or correct answer is 1 only? तो आंसर यहाँ से आ जाने वाला है ऑप्शन नंबर C for चेन्नई only. करेक्ट आंसर C आ रहा है क्या? हर्षित, all of you, हर्ष ओझा, all of you guys do reply fast. Are you all guys getting the same? वन आंसर आया था सभी का.
कुछ लोगों का डी कैसे आ गया, डी कैसे आंसर आएगा यार, 1 आएगा ना, चेक करो आंसर, ऑल ऑफ यू गाइज प्लीज चेक द आंसर। अब देखो इस सेम क्वेश्चन को मैं अभी के अभी एसएफजी से भी करूंगा, लेकिन उसके पहले आपको एसएफजी के कुछ फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं, है ना। सो इफ आई टॉक अबाउट द सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड, we will discuss, we should know some terminology of SFG, we should know some terms like forward path, loop gain, non-touching loop gain, okay. So we'll discuss that one by one. Correct answer is 1 only here. Not D for Delhi, C for Chennai. Chennai Super King guys. Correct answer CS क्या आया क्या? All of you guys do reply. The same question we will solve right now only by using SFG. In the GATE exam, will always prefer SFG or block diagram, okay. So if I talk about SFG method, so let me quickly revise the SFG formula first of all. Signal flow graph. To find the transfer function from the signal flow graph formula, we have to use this formula Pk del K upon del. Pk del K upon del, and where K start from 1 to n. K starts from 1, 2, 3 and so on. Where Pk represent the forward path parameter for kth term. It is representing what guys? Forward path. It is representing forward path parameter for kth term. And what about the del? So del is nothing but 1 minus ka sum of all individual loop gain. Sum of all individual loop gain. All individual loop gain. Now what is the loop gain and all that also we'll discuss, no problem. Plus the sign will be alternate, 1 minus plus sum of gain product of two non-touching, sum of gain product of two non-touching loop gain. Two non-touching loop gain. Are you getting my point, beta? And similarly here alternate sign minus, everything remains same, sum of gain product of three non-touching loop gain. Three non-touching loop gain. Is this clear, beta? Now what about here, most important, Pk means forward path for kth term. So suppose that if the transfer function is having two forward path, तो formula केवल क्या बन जाएगा, P1 del 1 plus P2 del 2 upon del. What is del K? Del K is very important here. Del K is that value of del obtained by removing all the touching loop from the kth, from the, or we can say that again मैं वापस repeat करूँ, del K. Del K, it is that value of del which is obtained by removing all the touching loop from the kth forward path. It means del 1 del का वो वैल्यू है जो कि कब आएगा, जब हम P1 फॉरवर्ड पाथ से वो सारे लूप गेन रिमूव कर देंगे, वो डेल में से वो सारे लूप गेन रिमूव कर देंगे जो P1 फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है ना। अगेन आई एम रिपीटिंग, del 1 is that value of del that will obtain by after removing all the touching loop, from del, all the touching loop to which forward path? P1 forward path. Is it clear? So del 1 वो del का वैल्यू है, मतलब del 1 del में से निकाला जाएगा, del 2 भी del में से निकाला जाएगा. So what is the definition of del 2? Del 2 is that value of del which will obtain by removing all the touching loop to the second forward path. क्योंकि del 2 है ना, तो del 2 मतलब second forward path. del 3 मतलब del का वो वैल्यू है जो कि कब आएगा, when we will remove all the touching loop from the third forward path. बात समझ में आया है ना? ये सब कब समझ में आएगा, जब और ज्यादा, if I will take the example. So let me take first example here. Suppose a student, this is my first basic example for the SFG. Okay, all of you please try to make the diagram. All of you please try to make this diagram. Oh, sorry. So this is my C of S, suppose karo. This is my R of S. This is my 1. Here is suppose that you have the G1, here we have the G2, here we have G3, here we have G4, here we have minus ka H1, here we have minus ka H2, and here you will have minus ka H3, and here you will have 1. So now student tell me, let me take one more self loop gain. This is known as self loop gain, right? Minus ka H4.
So student, for this, if you want to apply transfer, directly apply the SFG methods, CS upon RS. So from this example, you will get, we can recall all the concept of P1, del 1, del 2 also, A1, del, है ना, सब कुछ हम यहाँ पर लिखते हैं फटाफट से. आप बताना पहले, how many forward path we will have. All of you please reply. I will be feel very happy if you will reply in the chat box. Tell me how many forward path. Tell me प्यारे बच्चों जोर से, how many forward path. सर जोर से तो बोलते हैं पर आना भी चाहिए हमको, आ नहीं रहा सर. बच्चों आ रहा है क्या आपकी? इट इज वेरी इजी यार, वेरी इजी. हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ? फॉरवर्ड पाथ तो बड़ा आसान है. द नंबर व्हाट इज द फॉरवर्ड पाथ? नंबर ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम द इनपुट नोड टू आउटपुट नोड. बट व्हाट इज द कंडीशन? टू फाइंड आउट, टू कैलकुलेट द फॉरवर्ड पाथ, वी आर नॉट सपोज टू रिपीट एनी नोड. We are not supposed to repeat any node. It means how many forward paths? Straight line G1, G2, G3. Second is G4. तो कितने forward path हो गए? आप बोलोगे सर G1, G2, G3 पहला forward path. Second forward path is G4 only. Are you getting my point? So in this question we are having only two forward path. So our final formula will be look like this. क्या बताओ जरा? C by R का final formula ये बनेगा क्या? P1 del 1 plus P2 del 2 upon del. Now student, I am already completed with P1, P2. हमारे पास already P1, P2 है. We are left with del. So first we'll calculate del, and once we will have del, we can find del 1 and del 2 as well. बोलो रे बोलो, जोर से बोलो. yes or yes. अब बताएंगे loop gain, बताएंगे 1 minus sum of all individual loop gain. How many loop gain प्यारे बच्चों? हो loop gain पूछ रहे हो सर? हमसे पूछ रहे हो? हाँ आपसे पूछ रहे हो. अच्छा हमसे, हाँ आप ही से पूछ रहे हैं. बताओ यार बच्चों, लूप गेन. इज इट माय लूप गेन L1? दिस इज माय लूप गेन L2? दिस इज माय लूप गेन L3? कैन आई टेक दिस लूप गेन L4? क्या इसके अलावा भी और कोई लूप गेन है? यस और नो? टेल मी. सो आई एम टेकिंग फर्स्ट लूप गेन एज ए माइनस का G1 H1, माइनस का G2 H2, माइनस का G3 H3 एंड माइनस का H4. These four individual loop gain I already took, my dear student. Is there any loop gain left? Tell me how many loop gain in this question. Number count करके बताओ chat box में. I want number from you all. I want simple number from you all. बताओ जरा फटाफट से. कितने नंबर? How many number of loop gain प्यारे बच्चों? How many number of loop gain for this? Can you please let me know प्यारे बच्चों? Do reply fast. क्या बात है. 5. पास. शाबाश. नाउ सम इनोसेंट स्टूडेंट, कुछ मासूम बच्चे शायद ये बोलेंगे कि सर ये लूप गेन है क्या सर? ये नहीं है. दिस इज नॉट द लूप गेन गाइस, बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम दिस नोड, वी कैन नॉट रिपीट द नोड. जब हम यहां से यहां गए थे ना, तब इन दोनों नोड को टच कर लिया था, वापस टच नहीं कर सकते. ओके सर. इट मींस shall we take this loop gain sir? G4 H3 H2 H1 minus, it means ultimate minus sir, and shall we do like this? It is nothing but G4 H3 H2 H1. It will be G4 H3 H2 H1. Oh बोलो जल्दी. yes or no? 1 2 3 4 5 loop gain. Now tell me guys, is there any still left with non touching loop gain? क्या अभी हमारा non touching loop gain बाकी है क्या? All of you please let me know, is there any possibility of two non touching loop gain? How to check sir? L1 L2 touching sir, but L1 L3 non touching sir. L1 L3 non touching, क्या बात कर रहे हो? yes, so we should take gain product L1 L3. We should take gain product L1 L3. L1 L3 non touching sir. Okay, come sir. Then L1 L4 also should come sir. L1 L4 gain product of two non touching loop gain. अच्छा. L1 L4 L1 L3 already came. Now tell me L1 L5. L1 L5 touching sir. Then L2 L3 हमेशा इस तरह से काउंट किया जाता है ना. तो L2 L3 टचिंग. L2 L4 नॉन टचिंग. अच्छा. L2 L4 नॉन टचिंग. L2 L4 नॉन टचिंग. बट L2 L5 तो टचिंग है सर, क्योंकि L5 तो ये पूरा है ना टचिंग है. L2 after L3 L4 touching, L3 L5 touching L4. So it means how many combination for two non-touching loop gain? In this question, how many possibility for two non-touching loop gain? Can you please type the number? For me प्यारे बच्चों, जरा रिप्लाई करो यार फटाफट से.
How many number of two non-touching loop gain? How many number of two non-touching loop gain? Student, we are left with what? We are completed with P1, P2 and del. We are just left with del 1, del 2. अगर del 1, del 2 आ जाए तो मजा आ जाए. बोलो yes or no? We are already completed with del, entire del. I already told you the definition of del as well, del 1 as well. Del 1 is that value of del obtained by removing all the touching loop from the first forward path. del 1 आसान लैंग्वेज में बोलो सर, हिंदी में बोलो सर, आप हिंदी में रिपीट कर रहा हूं, कोई बात. del 1 del का वो वैल्यू है जो कि कब आएगा? आफ्टर रिमूविंग ऑल द टचिंग लूप टू द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ. मतलब पहले फॉरवर्ड पाथ को जो भी लूप टच कर रहे हैं ना सर, उसको del में से रिमूव कर दो सर. जो बचेगा वो del 1 बच जाएगा, जो बचेगा वो del 1. अच्छा तो बताओ. Now student, if someone don't know the P1 forward path, then they cannot comment on del 1. If you wish to find del 1, then first of all you should focus on P1. अगर P1 नहीं पता तो del 1 कैसे निकालोगे यार? बोलो yes or no. Now student tell me, सर P1 फॉरवर्ड पाथ को तो सभी टच कर रहे हैं सर, लगभग सब टच कर रहे हैं. L1, L2, L3, L4, L5 for the straight line. For this straight line, for the P1 forward path, all the loop gains are somewhere touching. It means all the loop gain should remove from del. अच्छा del में से सब loop gain remove कर दो सर. ये 1, L1, L2, L3, L4, L5. If all the individual loop gains has been removed from del, then we are left with only 1. अरे बोलो अरे यार yes or no, 1 बचेगा सर, तो इसका मतलब del 1 1 आ गया. yes sir. अब कुछ मासूम बच्चे हमेशा del 1 del 2 को 1 कर देते हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता. यहाँ पे हो रहा है अभी. del 2 क्या जरा बताओ. कुछ लोगों का लॉजिक बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, वो लोग सर del 1 1, सो सिमिलरली del 2 also 1. ऐसा नहीं है पाए बच्चों. del 2 क्या होगा जरा बताएंगे आप लोग. If you are clear with the definition, if you are from South student, you need to remember this sentence. Del 2 is that value of del. If you are more comfortable in English, del 2 is that value of del obtained by removing all the touching loop from the second forward path. If you are comfortable in the Hindi, del 2 del का वो वैल्यू है जो कि कब आएगा? आफ्टर रिमूविंग. जब हम रिमूव करेंगे, क्या रिमूव करेंगे? सारे टचिंग लूप को रिमूव कर देंगे फ्रॉम सेकंड फॉरवर्ड पाथ. अच्छा सेकंड फॉरवर्ड पाथ को जितने भी लूप गेन टच करें उनको रिमूव करना है. यही तो करना है, आसान लैंग्वेज में यही करना है. बताओ सेकंड फॉरवर्ड पाथ है कहां? ये रहा सेकंड फॉरवर्ड पाथ, रेड वाला, ये रेड वाला, लाल वाला, ये सेकंड फॉरवर्ड पाथ. दिस इज सेकंड फॉरवर्ड पाथ. For this second forward path, L1 is touching, L3 is touching, L4 is touching. All should remove. We are left with L2 is not touching, sir. Oh, L2 is not touching, sir. So it should remain as it is, sir. L1 should remove, sir. Yes. L1, let me take this pen. ये लेते हैं ना, हाइलाइटर हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाइलाइटर है हमारे पास. तो ये रिमूव हो जाएगा. रिमूव सर. दिस इज ऑल्सो रिमूव सर. ये भी रिमूव. केवल बचेगा क्या? ये. Otherwise all remove. So what we should write, sir, what we should write कि sir del 2 is nothing but 1 minus का L2. How many of you guys agree with me? 1 minus का L2 लिखा क्या किसी ने? 1 minus का L2 लिखा किसी ने? बताओ ना यार, del 2 क्यों नहीं बता पा रहे हो आप लोग? All of you, I will be feel very happy guys. It should be the win-win situation from both sides, okay? I think I am only excited to teach you. You should also have the same excitation, same enthusiasm, same energy. If you actually want to learn something, if you actually want to make this event successful for you, okay? आप लोगों के लिए अगर ये कब सक्सेसफुल होगा? जब आप अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, अच्छे से रिप्लाई कर रहे होंगे, कमेंट कर रहे होंगे, अटेम्प्ट कर रहे होंगे, सिंसियरली, ऑनेस्टली, ईमानदारी से. बोलो पहले बच्चों यस और नो. डन हो गया. समझ में आ गई बात आपको? समझ में आ गई. अगर बात समझ में आ गई तो देखो, इस क्वेश्चन को अब एसएफजी से करते हैं. अब द सेम क्वेश्चन एचएफजी से करेंगे विदाउट मेकिंग एसएफजी. व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक सर? इफ एनी ब्लॉक डायग्राम विल कम इन द गेट एग्जाम, वी विल नॉट सॉल्व बाय यूजिंग द ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा, वी विल सॉल्व बाय यूजिंग द एसएफजी विदाउट मेकिंग एसएफजी. अब गेट एग्जाम में इससे एसएफजी बना के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. अब हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे कि while making the SFG from the block diagram, each and every summing point and takeoff point will behave as a node. मतलब ये जो भी टेको पॉइंट, समिंग पॉइंट, ये सब ये नोड बन चुके हैं. अब आपको केवल ट्रेवल करना है. अब इसको एसएफजी से कर रहे हैं, हवा में उड़ाते हैं. देखो हवा में उड़ाए, इसको एसएफजी से करते हैं. देखो तो एसएफजी से करो, बताओ हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ. सो यू विल से कि सर
हाउ मेनी वेज टू रीच एट CS फ्रॉम RS? भाई CS पे पहुंचने के कितने रास्ते हैं? RS से स्टार्ट करना है, पहला ये G1 एंड सेकंड इज दिस वन, सो शैल वी राइट 1 plus G1? Yes or no? Yes. Now tell me guys, how many loop gains we are having? So you will say कि सर ये एक यहां से एक लूप गेन स्टार्ट हुआ, ये लूप गेन है क्या? ये सब लूप गेन है। क्या लूप गेन बना? माइनस का जी है, G1। क्या और कोई लूप गेन है? इज देयर एनी अदर लूप गेन? अब कुछ मासूम बच्चे ये ऐसा बोल देंगे कि सर ये भी तो एक लूप गेन बन रहा है। ये नहीं बन रहा है, ये लूप गेन नहीं है, पैरेलल है। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो, लूप गेन एक ही है इसमें, लूप गेन एक ही है इसमें। और ये 1 माइनस माइनस प्लस G1 कट के वापस आंसर 1 आ गया। 1 आ गया मतलब चेन्नई सुपर किंग आ गया। बोलो यस और? आर यू गेटिंग माय पॉइंट प्यारे बच्चों? So what I want to conclude कि any block diagram algebra question we can solve by using SFG, and in the GATE exam will always give preference to the SFG। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अब फटाफट से, क्योंकि काफी कुछ डिस्कस करना है हमको। अच्छा बताइए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? डू रिप्लाई फास्ट। All of you please let me know what is the answer of this. What will be the answer of this question, guys? Tell me. Sir, whenever any takeoff point moving after a block, we need to divide. Whenever a takeoff point moving after a block, we need to divide. Divide means H2 का डिवाइड होगा इस ब्रांच में, तो क्या H upon G2 आएगा? तो ये सर व्हेनेवर करते हैं पहले, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, आपको केवल फील करना है। योर फीलिंग शुड बी स्ट्रॉन्ग। इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग देन आप लोग फील कर सकते हो कि जहां भी टेकओफ पॉइंट, समिंग पॉइंट है वो नोड है। तो बताइए हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ? तो बोलोगे सर फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ ये 1/s, I am writing 1/s square. The second forward path, can I take this as a s and 1/s? SS get cancelled, so 1. So we will have only 2 forward path. Yes sir. Now tell me how many loop gains? So you will reply 1 minus. So I took already this as a forward path ये, और second forward path ये s और 1/s। Now loop gain की बात कर लेते हैं। loop gain ये this s and negative feedback minus. So shall I write minus का s? Yes sir, minus का s. The second loop gain, can I take this loop gain 1/s? ये वाला, can I take this loop gain? Yes sir. So it will give me minus का 1/s, है ना। एक एक लूप आपको दिखाता हूँ, फिर लिखता हूँ, फिर रिमूव करते हैं इसको, ठीक है। बताइए इज देयर एनी अदर लूप गेन? यस सर, एक और लूप गेन बनना है, ये वाला, ये 1s और ये 1/s और ये लूप गेन नेगेटिव। So SS get cancelled, so is it -1? Yes, -1. Now tell me, is there any other loop gain? Yes sir, तो ये 1/s again माइनस के साथ, so it will minus का 1/s square। हो और कोई लूप गेन? Is there any other loop gain प्यारे बच्चों? No reply. No sir, और तो कोई लूप गेन नहीं है। Is there any possibility of 2 non-touching? No sir, all the loop gains somewhere touching. So just take the LCM, you will get the answer. So you will get s square plus 1 upon s square upon here also take the LCM. So you will get what? s square plus s plus 1 नहीं, s आएगा 1 into s। बोलो जोर से बोलो। और यहाँ पे भी तो s स्क्वायर एलसीएम लिया तो ये s क्यूब हो जाएगा ना। यस और नो? देखो सिंपल s स्क्वायर एलसीएम लेते तो ये s क्यूब हुआ, ये s स्क्वायर हुआ, ये s हुआ, यहाँ पे वापस से s स्क्वायर आएगा प्लस के साथ, और फाइनली यहाँ 1 आ जाएगा। s स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल एक्सप्रेशन जो मेरा आ रहा है यहाँ, फाइनल एक्सप्रेशन विल बी न्यूमरेटर कैरी s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, इट शुड बी सर s क्यूब प्लस s स्क्वायर मिलके क्या बनाया? 2s स्क्वायर प्लस s प्लस 1। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस गेटिंग दिस? इट इज द ओनली आंसर प्यारे बच्चों। यहां तक अगर मेरे साथ हो आप लोग तो रिप्लाई कर दो CC इन द चैट बॉक्स। इफ यू ऑल गाइस विथ मी टिल हियर प्लीज टाइप CC इन द चैट बॉक्स। क्या करेक्ट आंसर B फॉर बॉम्बे आ रहा है? एग्जैक्टली एक्सप्रेशन मैच हो रहा है। s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस s प्लस 1। तो सर ये फॉर्मूलाज हमने रिवाइज कर लिए थे पहले ही। यस स्टूडेंट, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई एम गिविंग यू एज ए चैलेंज दिस क्वेश्चन। अगर आप कंट्रोल सिस्टम अच्छे से पढ़े हो तो ये क्वेश्चन उड़ा के बताओ यार हवा में क्यों नहीं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको, टफ मतलब कॉन्सेप्चुअली जो स्ट्रॉन्ग है वही लोग कर पाएंगे इसको। बोलो, डू यू वांट टू ट्राई दिस क्वेश्चन? आप लोग ट्राई करना चाहोगे एक बार? ऑल ऑफ यू? All of you guys just let me know, can you try this question?
प्यारे बच्चों, आई थिंक ऑडिबल, ऑडियो वीडियो क्लियर। बताइए इसमें हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ फर्स्ट ऑफ ऑल। सर अगर फॉरवर्ड पाथ की बात की जाए तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ इज G1 G2 G3 G4, यस और नो? यस सर। So shall we write the forward path G1 G2 G3 G4? G1 G2 G3 G4 is the first forward path. The second forward path can be G4 G5. The second forward path can be G4 G5 प्यारे बच्चों. So we can say that G1 G2 G3 G4 first and second is G4 G5. G4 G5. Okay. Now tell me प्यारे बच्चों, how many loop gains we are having? How many loop gains for this question? Tell me. अच्छा फॉरवर्ड पाथ तो हमने लिखी, क्या और कोई फॉरवर्ड पाथ है? इज देयर एनी अदर फॉरवर्ड पाथ फॉर दिस? इज देयर एनी अदर फॉरवर्ड पाथ प्यारे बच्चों? एनी अदर फॉरवर्ड पाथ? आप लोग सर फॉरवर्ड पाथ हमने G5 G4 लिया, दिस इज नॉट द फॉरवर्ड पाथ, दिस इज आल्सो नॉट. सो एज फार एज फॉरवर्ड पाथ इज कंसर्न वी आर ऑलरेडी कंप्लीटेड विद टू फॉरवर्ड पाथ. नाउ हाउ मेनी लूप गेन्स वी आर हैविंग? 1 माइनस. बताइए लूप गेन बड़ा इंपॉर्टेंट है. Shall I consider this loop gain L1 G1 G2 H1 माइनस के साथ? So if I will take, then you will get minus G1 G2 H1 minus का G1 G2 H1 is nothing but minus का G1 G2 H1. Okay sir. The second loop gain is minus का G3 G4 H3 minus का G3 G4 G3 G4 H3 minus का G3 G4 H3. Okay sir. The next loop gain is, shall we consider this loop gain as L1 मैंने दिया है, L2 ये, L3 can we take L3? L3 मतलब G2 G3 minus का H2 minus का G2 G3 H2. I am asking how many loop gain in this question. मैं बता रहा हूँ यहाँ पे maximum students are committing mistake. बहुत से student गलत होते हैं generally. All of you tell me how many loop gain in this question. So we already considered 3 loop gain, L1 L2 L3 already आ चुके हैं. I am asking the number of loop gain. टाइप तो करो. 4 loop gain, 5 loop gain, 6 loop gain. कितने हैं? कितने loop gain है प्यारे बच्चों? रिप्लाई करो. I am waiting for you. How many loop gains we are having in this question? हर्षित ने बोला है 6 loop gain. Very nice बेटा, very nice for attempt. Any other student? Any other student? Please let me know how many loop gain in this. बताओ यार कितने loop gain है? तो चलिए L1 L2 L3 हमने बोला. L4 loop gain दिख रहा है आपको? यस सर दिख रहा है हमको. कौन सा सर? कैन आई टेक दिस लूप गेन एज ए L4? जरा देख, ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखें. हाँ ध्यान से देखो, ये वाला, ये G1 G2 G3 G4 H4 ये वाला देख लो. माइनस के साथ G1 G2 G3 ये स्ट्रेट लाइन G1 G2 G3 G4 G1 G2 G3 G4 एंड ये माइनस का H4. Are you getting my point बेटा? फोर्थ लूप गेन. Can we consider one more? There's a fifth loop gain as a G5. है ना? G5 G4. I am considering one more. G5 G4 माइनस के साथ G5 G4 ये I am considering this G5 G4 माइनस का H4 ये आउटर साइड G5 G4 माइनस का H4 है ना? तो G5 G4 माइनस का H4 ये G5 G4 माइनस का H4. Now tell me guys, is there any other loop gain? So we'll reply G5 G4 minus का H4 covered sir. अब बताइए और कोई loop gain है क्या? Yes sir, we will have one more loop gain. बताइए जरा one more loop gain. So shall we take कि सर ये आपने लिया, can we take this also क्या? G5 G4 minus का H3 minus का H1. So this time minus plus. This time minus plus. So G5 G4 देखो आप G5 G4 H3 H1 ये देखो आप G5 G4 H3 H1 minus plus. Is there any other forward path? Sorry, is there any other loop gain प्यारे बच्चों? देखो कितने हो चुके ऑलरेडी? 1 2 3 4 5 6. Already 6 loop gain I covered. Still one loop gain left. Still one loop gain left प्यारे बच्चों. हो अब देखो हालात बदलेंगे, जज्बात बदलेंगे. कुछ लोग सोच रहे थे ओनली 5 है, अरे ओनली 6 तो आ चुके. अब देखो जरा दिल थाम के बैठेंगे. फिफ्थ वाला देखते हैं आराम से.
तसल्ली से देखिएगा। फिफ्थ वाला, सॉरी सेवंथ लूप गेन। सेवंथ लूप गेन देना, ध्यान से देखेंगे। G5 माइनस का H2, G2 और माइनस का H1। हो, अरे सर गजब हो गया सर, ये तो हिडन लूप था सर, हिडन लूप। इट इज लुक लाइक हिडन लूप प्यारे बच्चों। दिख रहा आपको, ये दिख रहा आपको, थोड़ा ब्लिंक हो रहा रेड वाला। G5 माइनस का H2, G2 माइनस का H1, ये दिस इज ए लूप गेन सर, वेरी इंपॉर्टेंट लूप गेन। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या लिखेंगे इसको? प्लस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। देन G5 H2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई एम राइटिंग हियर G5 देन माइनस का H2, देख रहे हो? G5 देन माइनस का H2, देन G2 एंड H1, और ये सभी क्या है? प्लस के साथ। ये सभी क्या है? बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो रे, बोलो रे प्यारे बच्चों, जोर से बोलो। अरे सर समझ में आ गई बात, समझ में आ गई सर। हाउ मेनी इंडिविजुअल लूप गेन प्यारे बच्चों? L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, total 7 loop gain. And the best part of this question, all the 7 loop gains somewhere touching, so no scope of 2 non-touching loop gain. Tell me, this is P1, this is P2, this is entire del. This is entire del. So what about del 1? Del 1 is 1. Because all the loop gains touching to the first P1 forward path. सभी P1 forward path को टच कर रहे हैं ना सर? Second forward path ये वाला है, and second forward path को भी all the loop gains are somewhere touching. It means del 2 also. So this is the final answer, guys. This is the final answer for this question. Are you all guys with me till here? Then please type CC in the chat box. Crystal clear. एक बार फटाफट से CC टाइप करेंगे चैट बॉक्स में अगर आप मेरे साथ हो। If we all are on the same page, please do reply CC in the chat box प्यारे बच्चों। आइए फटाफट से इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं हवा में। All of you please try to comment fast. How many forward path first of all of you? All of you please tell me. So अगर आपको क्वेश्चन का डायग्राम क्लियर नहीं है तो डायरेक्शन में यहां से आपको बता दूं। This is all about the directions. So as far as forward path is concerned, we are having only one forward path, that is G1, G2. अब मैं लूप गेन आपसे चाहूंगा प्यारे बच्चों, can you please tell me loop gain for this question? Can you please tell me loop gain for this question, guys? ये हुई ना बात? गौरी, very nice. Everyone please do reply. And प्यारे बच्चों, if you are my ex classroom student, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, है ना, जो लोग नए बच्चे हैं जो पहली बार देख रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग माय इंट्रोडक्शन टू ऑल ऑफ यू। आई एम हैविंग 16+ year teaching experience. I taught more than 30+ cities offline in India, okay, for the GATE and ECE. Okay प्यारे बच्चों, so if you have attended any of my classes, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो कमेंट जरूर करिएगा अपनी फीलिंग को, है ना, और जो लोग सेशन को देख रहे हैं वो लोग भी अपने एक्सपीरियंस को कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आई विल लव टू सी योर कमेंट्स गाइस, योर फीलिंग्स। ओके, जरा फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले G1, G2, ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी G1 लूप गेन कितने हैं, जरा बताइए। काउंट करके बताओ, लूप गेन काउंट करें ना। अब इससे आपको एसएफजी नहीं बनाना, टाइम वेस्ट नहीं करना। वी शुड विजुअलाइज द एसएफजी, वी शुड फील द एसएफजी, बिकॉज वी नो दैट while making the SFG from the block diagram, each and every summing point and takeoff point and differencing point will behave as a node. So don't you think प्यारे बच्चों कि क्या मैं ये एक लूप गेन ले लूं? ये ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला ये सबसे आसान दिख रहा है मेरे को, G1, G2, H2. Shall we take this माइनस के साथ सर, माइनस के साथ सर, G1, G2, H2, G1, G2, H2, ये माइनस के साथ G1, G2, H2. ओके सर, ओके। The second loop gain I am considering this G1, G5, H1 माइनस के साथ थी, माइनस के साथ G1, G5, G1, G5, H1, G1, G5, H1 माइनस के साथ, माइनस G1, G5, H1 नेगेटिव। Shall we take any other loop gain? Yes sir. और कोई लूप गेन दिखाओगे सर? हाँ देखो सर, ये देखो, ये G1, G2, देखो चेक करो, G1, G2. So I am writing here माइनस के साथ G1, G2, next G1, G2, G3, G6, G1, G2, G3, G6, ये G1, G2, G3, G6, H1, G6, H1 with negative sign, minus sign.
Is there any other loop gain? Yes, sir. So you can write G1, G2, G4 with minus sign. G1, G2, G4. G1, G2, G4, G3, H1. G4, G3, H1. Please to reply, प्यारे बच्चों. Shall we say that G1, G2, G4? Please do reply. G1, G2, G1, G2, G4. G1, G2, G4. क्या लिखा था हमने? G1, G2, sorry, G1, G2. हाँ, G1, G2, G4. Then G6 है ना यहाँ. G3 किसने लिख दिया? G6 ये. Please check this. G1, G2, G4, G6, H1. G6, H1. जरा चेक करेंगे प्यारे बच्चों. और कोई लूप गेन है क्या? जरा रिप्लाई कर दो या चैट बॉक्स में. I will be feel very happy if you will reply. If all of you will reply, then तभी मजा आने वाला है ना. फटाफट से रिप्लाई करेंगे. हाँ, क्रिस्टल क्लियर हो गया. इसमें लूप गेन कितने जरा बताओ. लूप गेन this L1, this also L2, this also L3, L4. टोटल 4 इंडिविजुअल लूप गेन है और चारों ही जो है कहीं ना कहीं टचिंग है. और del 1 भी 1 है because all the 4 loop gain are touching to the P1 forward pass straight line. So this is the only answer प्यारे बच्चों. This is the only correct answer. Look like tough question but it is easy only. It is look like tough question but actually it is easy. Please do reply प्यारे बच्चों. Shall we go for next? अच्छा, अगर आप लोग चाहते हो टाइमिंग चेंज करना, कुछ लोगों को शायद अभी कुछ खाने पीने का कुछ खाना होगा. इफ यू वांट टू हैव योर डिनर, अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में हम 6 to 10 की जगह 5 to 9 कर दें टाइम को, है ना, तो आप थोड़ा सा बता देना कि टाइमिंग ये सही है 6 to 10 और आपको टाइमिंग को 5 to 9 करना है. अच्छा बताइए पहले, सबसे पहले यहाँ तक की बात ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट है. चलो आगे चलते हैं. थोड़ा सा हम क्विकली करेंगे तो मजा आएगा प्यारे बच्चों. कैन यू प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? All of you tell me what is the answer of this CS upon RS. What will be the CS upon RS प्यारे बच्चों for this? So student, always remember whenever any self loop of any gain if occur at the input node, it will always be discarded because for the input node what is the condition? All the branches should be outgoing. No incoming branch is valid for the input node. So अभी मैं कन्वेंशनल पूरा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा बट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको कि इस क्वेश्चन में कुछ लोग क्या करेंगे पता है. कुछ मासूम बच्चे ऐसा करेंगे. मासूम बच्चे क्या करेंगे? फॉरवर्ड पाथ लिखेंगे 7, देन लूप गेन लिखेंगे यहां से 1 माइनस का 4 और माइनस का 3 और फिर लिखेंगे नॉन टचिंग. सो 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस. ये करेंगे, ये रॉन्ग है. दिस इज रॉन्ग. व्हाट इज करेक्ट? कि स्मार्ट स्टूडेंट को याद रखना स्टेटमेंट whenever any loop gain of any gain at input node will always be discarded, then question will only take this forward path 7 है और loop gain 1 माइनस का -4 है. करेक्ट आंसर आपका 7/5 है. 7/5 है मतलब 14/10 है मतलब 1.4 है. बोलो यार यस और नो. बोलो यार यस और नो. इज इट क्लियर? यस सर. अगर प्यारे बच्चों ये चीज क्लियर है तो जरा ये क्वेश्चन करके बताओ. ये करके बताओ जरा. ये करके बताओ. क्या करके बताएं? ये ऐसा सेल्फ लूप है. ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस वन. -10 ओके 1 -8 ओके अगेन 1 और here is -5 and here we are having output y and here we are having input r and you need to find y by r. And this question I am expecting from you. I don't want even to solve this. I don't even want to solve this. Please try to solve. I want to check your. I want to just check your attempt प्यारे बच्चों. देखते हैं आप में से कितने लोग सही करते हैं. देखते हैं आप में से कितने लोग सही करते हैं. Do reply fast. All of you. Let's see how many of you are able to solve this. देख लेते हैं ना. अभी देख लेते हैं ना. हाँ सब देख लेना आप. अरे देख के लेना. अभी देख लेते बताओ. All of you just try to attempt. Let's see how many of you are able to solve this. Come on, come on, come on. All of you guys tell me. Student, I already told you कि whenever any self loop of any gain
at input node will always be discarded. I hope you are trying. I hope आप attempt कर रहे होंगे. Yes sir, attempt कर रहे हैं ना हम सर. क्या बात कर रहे हो आप? Attempt तो कर रहे हैं. बोलिए. वॉइस तो क्लियर है प्यारे बच्चों. वॉइस क्लियर. आई थिंक ऑडियो वीडियो क्लियर प्यारे बच्चों. आई थिंक ऑडियो वीडियो क्लियर. किसी का आंसर आया क्या? कोई आंसर आया क्या? 1/6 बोल रहा है कोई. कोई तो बोल रहा था आंसर अभी. चलो बताएं, देख लेते. ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार कंफर्म कर देना. स्टूडेंट, हाउ टू सोल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक, sir, whenever any self loop of any gain at the input node will always be discarded. तो क्या क्या डिस्कार्ड हो गया सर? पहले बात तो ये डिस्कार्ड हो गया. Then again you need to note down this, whenever any self loop of unity gain, whenever any self loop of one unity gain, I am not talking about -1. -1 का self loop तो valid है, but whenever any self loop of unity gain मतलब 1, only 1 का अगर कोई self loop है, so whenever any self loop of unity gain at any node will always be discarded, will always be neglected. मतलब ये भी नेग्लेक्ट हो गया, ये भी नेग्लेक्ट हो गया. तो बचा क्या? तो सर अगर आपको फॉरवर्ड पाथ में अगर मान लीजिए मैं ऐसा कुछ दे दिया हूं, यहाँ 1 था सब में 1 था फॉरवर्ड पाथ में, ठीक है. तो क्या आएगा फॉरवर्ड? बताओ. लूप गेन बोलोगे सर आप, ये 1. ओके सर 1. नाउ टेल मी हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ? 1 ओनली सर. लूप गेन जरा बताओ, लूप गेन कितना आया? सर ये तो एक लूप गेन है ना सर, -8 लूप गेन है. और कौन सा लूप गेन? -5 भी तो लूप गेन है, -5. These 3 is discarded guys. These 3 loop gain discarded. एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला. But these 2 still there, and these 2 are non-touching also. So we should take the non-touching. So it is 40. 8 5 is 40. Now you can solve this guy. This will be your final answer, I think. 1 upon, बोलो जरा 1. minus plus. So 8 और 5 13. So it will be plus का 13 और it will be 40. So final answer क्या है जरा बताओगे? 1 upon, क्या ये 1 upon 54 आ रहा है क्या? 40 plus 14, 1 upon 54. 1 upon 54 किसी का आंसर आया था क्या? All of you please let me know. Very beautiful question it is. Very beautiful question. Always remember, whenever any self loop of unity gain at any node, whenever any self loop, okay, or any self loop of unity gain at any node will always be neglected, or any self loop of any gain at input node will always be neglected, discarded. ठीक है. चलिए, तो आई थिंक यहां तक की बात आपको क्लियर है. आप लोग मेरे साथ है. एक बार बता दो यहां तक क्लियर है? इफ यू वांट टू रिपीट दिस आई विल रिपीट आल्सो बच्चों. डू रिप्लाई फास्ट. चलिए बताइए यार, इस क्वेश्चन को फटाफट से कर दीजिए. ऑल ऑफ यू टेल मी गाइज, how much time you will take to solve this? C by R. How many forward path we are having? So you will say forward path first is G1 sir. First forward path is G1. Tell me guys, second forward path. क्या second forward path है possible? Yes sir, G2 है ना. G2 ये देखो, G1 plus G2. So all of you guys do remember, whenever such type of problems will come, we should not make the SFG. Will directly solve by using the SFG only. हम SFG बनाएंगे नहीं, बट SFG का टर्म्स यूज करेंगे. फॉरवर्ड पाथ, लूप गेन्स एंड ऑल. टेल मी नाउ हाउ मेनी सेकंड? फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ इज G1, सेकंड इज G2.
Is there any other forward path? Third forward path है क्या जरा बताओ? Yes sir. We starting from here G1, then G2, and then this. So do we have plus G1, G2? Yes sir, G1, G2. Do we have any other forward path? Yes sir. So this time if you will start the journey from this side G2, okay sir, G2, then again plus sign G1, and then again U. So again G1, G2. So don't you think guys G1, G2, G1, G2, actually twice G1, G2. Total we are having 4 forward path, but this anyway we need to add. Anyway we can add this. Once explain sir. Do you want again explain the last question beta? Last question again एक बार repeat करता हूँ, कुछ लोगों ने बोला है. So बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? गरिमा I think. चलो Gori sorry. So Gori, just try to listen carefully beta. Always remember the short trick. For the SFG question, this is called self loop gain. This is called self loop. Okay. So whenever any self loop will come of any gain at input node R, because examiner wants us to find C by R na, Y by R. R is the input node. Then whenever any loop gain, any self loop of any gain मतलब यहाँ minus 10 हो, चाहे minus 100, minus 500, any gain at input node. If any self loop of any gain at input node will always be discarded, neglected, okay, इसको neglect कर दो, गायब हो गया. Then second is कोई भी self loop आ जाए अगर वो unity gain है, any self loop gain with unity gain, any self loop of unity gain at any node, मतलब किसी भी नोड पे अगर कोई self loop unity gain का आ रहा है, then we can directly neglect that. wrong है सर, neglect कर दिया. तो अब इस क्वेश्चन में बचा क्या? अब अगर इस क्वेश्चन को आप वापस बनाओ, रीड रो करो डायग्राम को, तो इस क्वेश्चन में अभी आपको बचा क्या? ये हट चुका है, ये हट चुका है, ये हट चुका, मतलब फॉरवर्ड पाथ तो स्टिल 1, फॉरवर्ड पाथ स्टिल 1. How many loop gain? You will say कि 1 loop gain minus 8, 1 loop gain minus 5. So individual loop gain minus 8 and minus 5. And then these two loop gains are also non-touching. Non-touching तो है ना सर? Non-touching है means we need to take gain product. So 8 5 जा 40. I am repeating for Gauri. Clear? Now tell me beta, what about this is P1, this is del, we are left with del 1. What is del 1? Del 1 is that value of del obtained by removing all the touching loop from the first forward path. तो first forward path को already सारे loop gain touch कर रहे हैं. So it means both should remove. So we are left with 1 only. So 1.1 is 1 only. And here 8 plus 5 13, 13 plus 1 14, 14 or 50, 14 or 40, 54. That's all. That's all प्यारे बच्चों. Gauri and all of you do reply CC in the chat box if it is crystal clear. I just repeated the concept just for you बेटा. आप लोगों के लिए रिपीट कर रहे हैं, अब आप रिप्लाई तो करो यार जोर से. Now all of you tell me कि sir forward path we are completed with the forward path sir. Now tell me CC. Very nice बेटा, very nice. CC means crystal clear. Very good. Now tell me is there any other loop gain प्यारे बच्चों? क्या loop gain है कोई? Yes sir, loop gain दिख रहा है ना आपको? क्या loop gain? Shall we take this is a loop gain G1, ये पूरा माइनस के साथ. Yes sir, माइनस का G1 is a loop gain sir. माइनस का G1 is a loop gain प्यारे बच्चों. Don't you think G1 is a loop gain माइनस का G1? The second is G2 again minus के साथ. Minus G2 is also a loop gain. So again G1 is a loop gain and then G2 is a loop gain. Okay sir. Is there any other loop gain? Yes sir, we can take. From here we can start G1, then G2, then here like this. So is it G1, G2? Yes sir. Minus G1, G2? Yes sir, minus G1, G2. Is there any other loop gain? Yes sir, we can do like this. We can start the journey from this G2. Just check this. Just try to listen carefully, please. G2. This is G2. देखो कहाँ जाना है? G2. Then G1. Then यहाँ से यहाँ. Then यहाँ से यहाँ minus side. Again minus G1 G2. Again minus का G1 G2 प्यारे बच्चों देख रहे हो आप? Yes. Is there any other loop gain बेटा? Is there any other loop gain? Do reply. Is there any other loop gain? Yes sir. One more. One more sir. देखो यहाँ से G1. This is G2 and again G1. ये G1 G2 G1 G2 प्लस के साथ G1 G2 प्यारे बच्चों, हाँ या ना? Are you guys getting my point? प्लस के साथ G1 G2. So don't you think this part and this part get cancelled? Don't you think this part and this part get cancelled? So final answer is nothing but C by R. So in the numerator we are left with what? G1 plus G2 plus G1 G2 मिलके क्या बनाएंगे? Twice G1 G2 upon
1 minus minus plus, open the bracket. So you will get 1 plus G1 plus G2 and again what plus G1 G2. अब reply कर दो यार, एक बार check करके reply करो. Are you guys agree with this? All of you guys clear with this? Please let me know. If you guys clear till here, please do reply CC in the chat box. If you all guys clear till here, then please do reply CC in the chat box. Crystal clear. हो बताइए फटाफट से. All of you do reply clear. ये देखो, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को कर पा रहे हो ना बच्चों, गेट क्वेश्चन में जो आएगा ना इससे भी आसान आएगा. गेट में whatever the question will come, which will be easier than all these questions. Okay, it is look like tough question, but it is actually, if you are conceptually strong, you can solve easily. Now tell me what is C by R. This time I want answer from you, beta. This time I want your attempt actually. This time I want your attempt. Bolo. How many forward path we are having? So you will reply first forward path is this G1. G1 is the first forward path. Tell me second, is there any forward path? Yes sir. ये G2 आ रहा देखो यहाँ से. ये G2, yes sir. G1 plus G2. Is there any other forward path? Yes sir. ये देखो ये G1, G3, but this time minus sign. G1, G3, G2 with minus sign. G1, G3, G2 minus sign. Because G1 ये G3 के साथ minus, फिर G2 minus sign. Is there any other loop gain? Yes sir. From here G2, G2, G4 and G1. अच्छा अच्छा. So I am writing here plus के साथ G2, G4, G2, G4 and G1. G2, G4, G1. G2, G4, G1. How many forward path प्यारे बच्चों? 4 forward path. 4. Total 4 forward path. How many loop gain? How many loop gain? So as far as loop gain is concerned, this is G1, G3 minus के साथ G1, G3, G2 and G4 with minus sign. So G1, G2, G3, G4 very easy, minus के साथ G1, G2, G3, G4. So ultimately minus minus plus in denominator. This is the only loop gain प्यारे बच्चों. Do reply. Don't you think this is the only loop gain? This is the only loop gain, guys. Do reply. Are you all guys agree with me? Please let me know. This question look like tough, but it is actually very easy because 4 forward path as well as only one loop gain. Only one valid loop gain, guys. Clear? Yes. Now student, here we are having multiple input, multiple outputs. So this time examiner can ask y1 upon r1, y2 upon r1. It means r1 as a input node, output examiner बोलेगा कि y2 का output node लो. तो अलग अलग 4 ट्रांसफर फंक्शन निकाले जा सकते हैं यहाँ से, है ना. अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है. Is it clear? y1 upon r1, y1 upon r2, y2 upon r1, y2 upon r2. Yes or no? But however, del will remain same for all because del is independent to forward path. तो बताइए del क्या हो जाएगा? आप लोग सर del is 1 minus का. बताइए 1 minus. How many loop gains we are having? Come on. So can you please tell me this is a loop gain? ये GS का. Don't you think this minus sign, minus का GS? Is it a loop gain, guys? Minus का G of S. Minus का G of S loop gain. ये देखो ऊपर वाला loop gain है minus का G. Similarly, this is also a loop gain, sir. ये वाला, ये GS. But this time plus का GS है, plus का GS. Minus का GS and plus का GS loop gain है ये, loop gain. Yes sir. All of you tell me, is there any other loop gain? Is there any other loop gain? Yes sir. ये दिख रहा है ना हमको ये वाला ये. है चेक करो loop gain और कोई है क्या? Yes sir. देखो from here, this loop gain already completed. Okay. This is a loop gain क्या? ये GS. देखो ये GS. Then from here, then from here, then from here. So GS and GS square with plus sign. Plus sign GS का whole square, guys. GS का whole square. बोलो yes or no? बोर्ड और आप बोल सकते हो GS दो बार आ गया तो G square S भी बोल सकता हूँ. Yes or no? G square S. क्योंकि GS दो बार आ गया ना. GS into GS. Is there any other loop gain? बोलो जरा डेल. सर loop gain तो नहीं है सर. Is there any other loop gain? No sir. Only three loop gain. L1, L2 और L3 is this. L3 is this ये पूरा घूमने वाला L3. But as far as del is concerned, don't you think we are having
Is there any possibility of two non-touching loop gain? Is there any possibility of two non-touching loop gain here? Yes sir, L1 L2 non-touching sir. So माइनस का GS and GS मिलके क्या बनाएगा? अगेन माइनस का GS स्क्वायर, अगेन माइनस का GS स्क्वायर, मतलब G स्क्वायर S बोल दो. सो फाइनली पता है आंसर क्या आएगा? ये कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली यू विल गेट 1 माइनस माइनस का G स्क्वायर S माइनस का G स्क्वायर S माइनस का G2 माइनस का ट्वाइस ऑफ, आप चाहे तो ऐसा लिख दो इसको, GS का होल स्क्वायर या फिर G स्क्वायर S. यस और नो गाइस? G स्क्वायर S और GS का कंप्लीट होल स्क्वायर. Tell me which expression is correct here. Which option correct? Option number C for Chennai. GS का whole square. Yes or no guys? GS का whole square. Is this clear? Correct answer option number C. प्यारे बच्चों, are you getting my point? चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये देखो ये बड़ा ही लेंथी क्वेश्चन है, जानबूझ के मैंने लिया है ताकि अगर ये क्वेश्चन कर लिया ना तो गेट क्वेश्चन बड़ा ही गिफ्टेड लगेगा, बड़ा आसान लगेगा. बहुत से गेट पीवाईक्यूज हम करेंगे अभी कंट्रोल अगले नेक्स्ट सेशन. फटाफट से करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 2 भी करना है हमको, 3 भी करना है अभी, है ना? ओके, जरा फटाफट से बताइए. द सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ ए सिस्टम शोन बिलो. इस क्वेश्चन में फटाफट टेल मी, एग्जामिनर इज आस्किंग कि टोटल टर्म्स कितने हैं, द नंबर ऑफ टर्म्स इन डिटरमिनेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हाउ मेनी इंडिविजुअल लूप गेन. ऑल ऑफ यू गाइस टेल मी इन दिस क्वेश्चन हाउ मेनी इंडिविजुअल लूप गेन. कितने इसमें इंडिविजुअल लूप गेन जरा बताइए. हाउ मेनी इंडिविजुअल लूप गेन. So बोला कि लूप गेन L1, can we say that L1 लूप गेन is this G2H1 माइनस के साथ, माइनस का G2H1, माइनस का G2H1. I hope it is visible. माइनस का G2H1, yes. अगर विजिबल नहीं है तो यहाँ से लिखते हैं ऐसा. ये भी शायद विजिबल है या नहीं क्या पता. माइनस का G2H1 विजिबल है, विजिबल है. माइनस का G2H1 माइनस के साथ है, माइनस के साथ. ये फर्स्ट लूप गेन लिया मैंने, माइनस का G2H1 L1. L2 लिया मैंने ये छोटा वाला, ये दिख रहा है आपको अंदर वाला सर्कल G7. So L2 loop gain is G7. L3 loop gain is G3H2. Shall we take L3 loop gain as a G3 minus का G3NH2 minus का G3H2, third loop gain L3. Shall we take L4 loop gain as a L4? L4 लिया मैंने G4 minus का H3 minus का G4NH3 minus G4H3. Shall we take L5 loop gain as a G8? L5 loop gain as a G8 guys. L5 loop gain as G8. L1, L2, L3, L4, L5, L6. What is the L6 guys? So L6 loop gain. This is L1, L2, L3. This is L4. This is L5. This is L6. So what is L5? L6 is G5H4 minus का G5 minus का G5H4. What is L7 loop gain guys? L7. बताओ L1, L2, L3, L6 तक कोई दिक्कत नहीं है. Shall we take this loop gain as L7? ये G9H2H1 दिख रहा है अब, ये ऊपर वाला G9H2H1 माइनस माइनस प्लस. So shall we say that G9H2H1 माइनस माइनस प्लस. Yes sir. Shall we take any other loop gain L8? Is there any other loop gain possible? Yes sir. देखो G10 H4 and H3 minus minus plus again. So shall we write here G10 H4 H3 or G10 H3 H4? Shall we take G10 H3 H4? बोलो प्यारे बच्चों, yes or no? So L8 L9. What is L9? So here G10 and then H4 H3. Okay. What is L9 loop gain? L9 is this. Shall we take this G4 G5 H5? So with minus sign sir again. G9 H2 H1 is G9 minus minus plus हो गया था ये. Okay. Now the next loop gain is G10. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये I am taking this guy G10 H3 H4 already covered. Now one more loop gain, that is nothing but G4 G5 minus का H5. So I am writing G4 G5 and minus का H5. So that is why I am taking minus sign here. G4 G5 minus का H5. क्या और कोई इंडिविजुअल लूप गेन है? इसका लास्ट लूप गेन दिख रहा है सर्कुलर शेप, फाइनली सर्कुलर शेप G10 H5 माइनस का G10 and H5. हाउ मेनी इंडिविजुअल लूप गेन गाइस? 10. एक बार आप लोग कमेंट करो प्यारे बच्चों कि इन दिस क्वेश्चन हाउ मेनी इंडिविजुअल लूप गेन्स? टोटल 10 इंडिविजुअल लूप गेन्स. नाउ प्लीज टेल मी हाउ मेनी पॉसिबिलिटी ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप गेन. जरा अटेम्प्ट करो एक बार यार, अगर कंट्रोल सिस्टम पढ़ा है तो जरा बताओ इसको. चैलेंज
Tell me how many two non-touching loop gain here. Tell me how many possibility for the two non-touching loop gain, guys. I will write here. How many possibility for the two non-touching loop gain? Two non-touching loop gain. Short में लिख रहा हूँ मैं. Short में. We'll write the product of two non-touching loop gain here. Product of two non-touching loop gain. So while the calculation of product of two non-touching loop gain will always refer from L1 से लेके L10 पे हम जाएंगे, है ना? तो हमारा जर्नी स्टार्ट होगा L1 से L2, फिर L3, L4 like that. So tell me L1, L2 touching, L1, L3 touching, but L1, L4 non-touching. So I should take here L1, L4. I should write here L1, L4 non-touching. L1, L4 non-touching. Second, बोलो जरा second. L1, L4 non-touching, L1, L5 also, L1, L6 also. L1, L5. Then third one is L1, L6. L1, L6. Fourth look and tell me, guys. L1, L4, L1, L5, L1, L6. Complete, sir. But L1, L7. This is L1, L7 is this. ये आप check कर लो यहाँ. L1, L7 touching. L1, L7 touching. But what about L1, L8? Sir, where is L8? ये देखो ना L8. L8 ये वाला. So L1, L8 non-touching. L1, L8 non-touching. Now tell me L1, L9. Where is L9? Sir, L9 ये वाला लिया था आपने, ये देखो ना L9 क्या लिया था, ये G4, G5 ये नॉन टचिंग है, और L10 भी नॉन टचिंग है क्योंकि L1 तो यहाँ रहा. तो L1, L9 भी नॉन टचिंग और L1, L10 भी नॉन टचिंग. अब अगर आपकी थोड़ी सी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, इफ यू आर ए गुड ऑब्जर्वेशन, इफ यू आर हैविंग ए स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, अगर थोड़ा सा स्ट्रॉन्गली आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो जो लूप गेन L1 से नॉन टचिंग थे, क्या वो सारे L2 से भी नॉन टचिंग है? चेक करो. L2, L3 टचिंग है, बट L2, L4 नॉन टचिंग, L2, L5 नॉन टचिंग, L2, L6 नॉन टचिंग, L2, L7 टचिंग, बट L2, L8 नॉन टचिंग, 9 नॉन टचिंग, 10 नॉन टचिंग. तो ये जो भी 6 कॉम्बिनेशन आए थे ना, ये सारे के सारे 6 कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो वैलिड फॉर L2. तो यहां पे क्या हो जाएगा? 7, 8, 9, 10, 11 और 12. उसमें क्या आएगा केवल? सर यहां से आएगा L2, L4. तो यू शुड राइट लाइक दिस L2, L4, क्योंकि ये वाला सेम रहेगा, केवल L1 की जगह L2 आएगा. तो L2, L4, L2, L5, यहां चेक करो, ये L2, ये L5 नॉन टचिंग. फिर नेक्स्ट L2, L6 नॉन टचिंग, ये L2, ये L6 नॉन टचिंग. देन L2, L7 टचिंग, L2, L8 नॉन टचिंग, L2, L9, ये L9 नॉन टचिंग, और L2 ये अंदर वाला गोला L2, और L10 मतलब ये बाहर वाला L10 है, तो L10 नॉन टचिंग, L2, L10. सो टोटल 12 कॉम्बिनेशन तो आ चुके हैं. कैन यू प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी नॉन टचिंग, हाउ मेनी टू नॉन टचिंग लूप गेन? प्यारे बच्चों, हाउ मेनी टू नॉन टचिंग लूप गेन? 13, 14 बताओ जरा. तो सर हमें जर्नी कहां से स्टार्ट किया? L1, L2, L3. अब हम L3 से स्टार्ट करेंगे. L3, L4 टचिंग, L3, L5 नॉन टचिंग. सो वी शुड राइट हियर L3, L5. L3, L5 नॉन टचिंग, L3, L6 नॉन टचिंग, L3, L6 नॉन टचिंग, L3, L6 नॉन टचिंग. ओके सर. L3, L7, L3, L7 टचिंग, L3, L8, L8, L3, L8 टचिंग, L3, L9 टचिंग, और L3, L10 also touching, sir. Okay. Now tell me guys, L4, L5 touching, L4, L6 touching. Now tell me L4, L7, L4, L7 is also touching, sir. L4, L8 touching, L4, L9 touching, or L4, L10 also touching. Now student again don't take L4, L2. ये गलती नहीं करना आपको, क्योंकि L4, L2, L2, L4 में आ चुका है ऑलरेडी. समझ में आया? अब आप जैसे जैसे आगे चल रहे हो तो हमको नेक्स्ट वाले नॉन टचिंग को काउंट करना है. L4 के बाद L5, L6. वापस पीछे नहीं आना. अगर पीछे आ जाओगे तो वो नोट रिपीट हो जाएंगे, वो लूप गेन रिपीट हो जाएंगे. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर प्यारे बच्चों? सो इट मींस टोटल हाउ मेनी? सो यू विल रिप्लाई कि सर हियर, यहां तक हमने देखा, अभी तक 14 आ चुके, अभी तक 14 आ चुके हैं. बताओ नेक्स्ट में. सर नेक्स्ट में बताएं. हाँ बताओ नेक्स्ट में यार. L5, L5, L6 टचिंग, L5, L7 नॉन टचिंग, L5, L7 नॉन टचिंग. देख रहे हैं आप? L5, L7, L5, L7 नॉन टचिंग, L5, L7 नॉन टचिंग. देन टेल मी गाइस, L5, L7 नॉन टचिंग है. L5, L8, L5, L8, L5, L8 टचिंग,
L5 L9 टचिंग और L5 L10 नॉन टचिंग। 16 ले रहा हूं मैं, L5 L10। व्हाट इज L5? L5 मतलब ये अंदर वाला सर्कल, L10 मतलब आउटसाइड सर्कल। सो L5 L10 नॉन टचिंग, L5 L10 non touching. Is there any combination of other non touching loop gain? Now this time we should start from L6. So L6 L7 non touching, L6 L7 non touching, then L6 L8 touching, L6 L9 touching, L6 L10 touching. Okay, then L7, this is L7, L7 L8 touching, L7, this entire L7, L7 L8 touching, L7 L9 touching, L7 L10 touching. Now L10 L8 से स्टार्ट करो। सो L8 क्या था? ये था L8 और L9 टचिंग। सिमिलरली L8 और L10 ऑल्सो टचिंग, और 9 10 भी टच कर रहा है, मतलब यही आ जाएंगे सर। दैट इज द ओनली टू नॉन टचिंग लूप गेन। सो कॉम्बिनेशन कितने हो गए अभी तक? वी आर हैविंग टोटल 10 कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन and we are having a total 17 combinations for 2 non-touching loop gain. Now प्यारे बच्चों, can you please tell me, is there any possibility of 3 non-touching loop gain? Is there any possibility for the 3 non-touching loop gain प्यारे बच्चों? बताओ यार। थ्री नॉन टचिंग लूप गेन है क्या? जरा बताओ। Is there any possibility for 3 non-touching loop gain? Tell me. So for the 3 non-touching loop gain, we need to consider this L1. Check करो आप। L1, L5, L10. So first combination I am writing L1, L5, L10. L1 ये वाला, L5, L5 ये वाला, और बाहर वाला L10. Is it visible बेटा? Do reply. Diagram में part is visible to you ना? गौरी, हर्षित, do reply. All of you reply ना, सब लोग reply करेंगे। Now tell me, is there any other 3 non-touching loop gain possible? Yes sir. L2, L5, L10 also possible. L2, L5 and L10 also possible. L2, L5, L10. So the number of term determinant except the unit term. तो डेल में क्या आएगा? आप बोलोगे सर डेल के अंदर आता है 1 माइनस का सम इंडिविजुअल लूप गेन। सम के अंदर कितने टर्म्स थे? 10, 10 प्लस 17, 27 प्लस 2 29। सो 1 के अलावा टोटल कितने टर्म है? 1 के अलावा टोटल वी आर हैविंग 29 टर्म्स। The final answer for this question is 29. The final answer for this question is 29. Is this clear बेटा? शाबाश, ये हुई ना बात। ऐसा रिप्लाई करते रहो आप लोग। चलिए ये बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। So tell me guys how to solve. So देखो फटाफट से इन दिस क्वेश्चन फटाफट बताओ y2 upon y1, y6 upon y1 and y7 upon y2. 3 क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम आस्किंग ए सिंपल क्वेश्चन टू यू। टेल मी बेटा कि y7 upon y1 is equal to y6 upon y1. This statement is true or false? Come on tell me. This statement is true or false प्यारे बच्चों? डू रिप्लाई। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बताओ जरा। Everyone let me know the statement is true or false. बताइए, this statement is true or false? Sir, y7 upon y1 और y6 upon y1 same only, 100% true है, 100% true. But if I will ask this कि y7 upon y1 is equal to y7 upon y2, then this is not equal, sir. This is not equal, sir. Because y2 is not a input node. We cannot take y2 as a input node. Examiner y7 upon y2 पूछ रहा है आपसे, yes or no? Yes. तो क्या निकालना होगा इस क्वेश्चन में? So first we have to find out y7 upon y1 और y6 upon y1 जो कि सेम है, yes. Tell me how many forward path? यहीं पे कर देते हैं फटाफट से। आप बोलोगे सर फॉरवर्ड पाथ है G1 G2 G3 G4, G1 G2 G3 G4, G1 G2 G3 G4 and G1 G5 plus G1 G5। देखो जरा G1 G2 G3 G4 and then G1 G5 forward path. Tell me how many loop gain we are having? So 1 minus का loop gain is minus का G1 H1
माइनस का G1H1, देन माइनस का G3H2, ये माइनस का G3H2, then guys tell me self loop gain minus का H4. Shall we take G1 G2 G3 H3 माइनस के साथ? yes sir. माइनस का G1 G2 G3 H3 माइनस का G1 G2 G3 H3. Is there any other loop gain? 1 2 3 4 loop gain already completed and the only 4 individual loop gains are present here. बताइए, is there any other loop gain? बताइए जरा. Plus now we have to consider two non touching. अब हमको two non touching count करने, तो ये हमारा L1 था, this is your L2, this is your L3 and this is your L4. बताइए जरा. Shall we take L1 L2 non touching? Yes sir. L1 L2 is non touching. L1 L3 is also non touching. L1 L3 is also non touching. L1 L2 L1 L3 and this L3 L4 is also non touching. L3 L4 is also non touching. So don't you think we are having total how many combination of two non-touching loop gain beta? Tell me how many non-touchings, how many non, ये आप true बोल रहे हैं शायद, ये true है but ये false है ना. मेरे को बताओ L1 L2 non-touching, L1 L3 और the next is L3 L4 is also non-touching. Total 3 non-touching loop gains are possible here. अब बताइए स्टूडेंट, is there any possibility of 3 non-touching loop gain with minus sign? Yes sir. 3 non-touching also possible. L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 3 non-touching loop gain also possible बेटा, हाँ या ना? L1 L2 L3. So this is nothing but entire del term. ये पूरा entire del है आपका. This is your entire del प्यारे बच्चों. Now student we are left with only del 1 del 2. जरा बताओ del 1 कितना del 2 कितना है इसमें? तो बोलोगे सर ये पूरा del है, ये पूरा del है. Del 1 तो 1 ही है because all the loop gains are somewhere touching to the first forward path, so that is why del 1 to 1 है. What about del 2? So del 2 L1 remove, L4 remove, L3 remove, but L2 not remove, so it will be 1 minus का L2. This is all about the first question answer प्यारे बच्चों. Yes or no? अगर मैं second question find करूं, second question में लिख रहा हूं ये y2 upon y1. I cannot take as a y2 as a input node. We cannot take y2 as a input node, but क्या हम y2 से output fetch कर सकते हैं? Yes, we can fetch the output from y2 node. So अगर आप यहाँ y2 से output fetch करोगे तो forward path कितना आया? 1. y1 से y2 forward path only 1. And the beauty of the concept is del is independent to forward path. Del will be independent to forward path. Okay? Yes. Now tell me guys, who will make the difference? Here del 1 will make the difference. Del 1 is that value of del obtained by removing all the touching loop from the first forward path. और इस बार first forward path केवल ये रहा red वाला. तो इस बार only L1 touching, L2, L3 और L4 also touching, but L2, L3 non touching. So don't you think we should write 1 minus का L2 plus L3 plus one more term also come, that is non touching. देखो L2 L3 का नॉन टचिंग वाला प्रोडक्ट भी आएगा. यस और नो गाइस? आपने यहाँ L1 L3 लिया, देन हमने L1 L2 लिया, L1 L3 भी लिया. L2 L3 नहीं लिया क्या? यहाँ L2 L3 भी था ना पहले. सॉरी शायद हमने लिखा नहीं. क्या यहाँ L2 L3 भी आएगा? चेक करो एक बार. टोटल 4 आएंगे ना टर्म? टोटल 4 टर्म आएंगे बेटा, प्लीज कंफर्म करो एक बार. देखो L1 L2 हमने लिया नॉन टचिंग, L1 L3 लिया. ओके, नेक्स्ट L1 L2 L3 L1 L4 टचिंग. फिर हमने L2 L3 लिया. यस सर, L2 L3. फिर L2 L4 टचिंग. फिर हमने लास्ट L3 L4 लिया. तो टोटल 4 आएंगे बेटा. यहाँ पे L2 L3 भी था, शायद हमने मिस कर दिया. L2 L3 भी आएगा यहाँ. तो यहाँ पे L2 L3 भी आएगा. आपको रिप्लाई करना चाहिए था यार प्यारे बच्चों. तो यह आएगा आपका y2 upon y1. ये देखो ये. और फाइनली इफ यू विश टू फाइंड y7 upon y2, अगर आप चाहते हो y7 upon y2 फाइंड करना, देन दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये पूरा इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है. जस्ट डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. तो दोनों का डेल कैंसिल होगा. ये भी डेल है, ये भी डेल है, कैंसिल होगा. सो आंसर y7 upon y2 मतलब अल्टीमेट न्यूमरेटर शुड कैरी दिस g1 g2 g3 g4 g1 g2 g3 g4 plus g1 g5 plus g1 g5 1 minus का L2
क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? यस। और अपॉन में ये पूरा टर्म आएगा, क्या आएगा? ये 1 माइनस का L2 प्लस L3 और प्लस L2 L3। सो तीनों ये क्वेश्चन हमने फाइंड कर लिए। 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। हियर यू हैव ए स्कोप टू मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे स्कोप था। बोलो बोलो बोलो, गौरी, हर्षित, ऑल ऑफ यू टू रिप्लाई। शैल वी गो फॉर नेक्स्ट और वेट? चलिए प्यारे बच्चों, तो अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं सेंसिटिविटी कॉन्सेप्ट का। तो जब भी बात होगी बेटा सेंसिटिविटी, ऑलवेज रिमेंबर द स्टैंडर्ड फॉर्मूला एस अल्फा बीटा is nothing but percentage change in alpha upon percentage change in beta. So it means what is the sensitivity? Sensitivity is a term that is used to find or that is used to check the total variation in the overall transfer function, or we can say that the change in the overall transfer function by doing a small, we can say that changes in some parameter or variable. So sensitivity is a term that is used to check the change in the overall transfer function for a relative change in some parameter or variable. So it means, sir, here S alpha beta, अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूला इज नथिंग बट हियर डेल अल्फा अपॉन डेल बीटा अपॉन बीटा। तो फाइनल फॉर्मूला आएगा आपका एस अल्फा बीटा का, दैट इज नथिंग बट एस अल्फा बीटा इज नथिंग बट बीटा अपॉन अल्फा डॉट डेल अल्फा अपॉन डेल बीटा, where alpha is a variable that change its value, where alpha is a variable that change its value, alpha is a variable that change its value, and beta is a parameter that will change the value of alpha, that change the value of alpha. तो इससे भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट प्यारे बच्चों। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ ए ओपन लूप सिस्टम? तो सेंसिटिविटी फॉर द ओपन लूप सिस्टम एस ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन टीएस with respect to G is nothing but 100%. So sensitivity for the OLTF is 100%. It signifies that open loop system is 100% sensitive towards noise and disturbance. The result for the closed loop transfer function, this is the sensitivity for the CLTF. So if I will find the sensitivity in the overall transfer function TS with respect to the variation in G मतलब GS है यहाँ, T मतलब TS है यहाँ, TS GS, then the final expression is nothing but 1 upon 1 plus G of S H of S into 100. We are representing sensitivity generally in the form of magnitude. So if I will consider magnitude, then in the form of percentage we can multiply with 100. So what you can conclude कि sir by observing OLTF और CLTF में the sensitivity, here the open loop system is 100% sensitive while the closed loop system sensitivity is reduced by how much factor? So you will reply reduced by the factor of 1 plus GSHS. So this is also a engineering services question, that in the closed loop system the noise reduction factor is 1 plus GSHS, because in the closed loop system or sensitivity going to be decreased by how much factor? 1 plus GSHS का divide हो रहा है. Similarly guys, if you will check the standard result, you need to remember S of TS with respect to HS, अगर आप mod नहीं लगाओगे then it will be minus का G of S H of S upon 1 plus GSHS into 100. As I told you, it is represented generally in the form of magnitude. So if you will take magnitude, it will be plus. So now student, tell me, if I will compare these two equation number, let me take small a, small b. Then tell me, this time, anyway it is magnitude, so 1, so minus हो गया plus. Now tell me, कि by observing equation number 1 and 2,
shall we say that कि closed loop system is more sensitive towards the variation in HS as compared to variation in GS? Because यहाँ पे sensitivity थी 1/1 plus GSHS और यहाँ पे हो गया GSHS upon 1 plus GSHS. It means we are multiplying with this factor. It means the sensitivity increases. मतलब ये आसान भाषा में मतलब ये कि क्लोज लूप सिस्टम इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड द वेरिएशन इन HS एज कंपेयर टू वेरिएशन इन GS. तो अगर मैं एक छोटा डायग्राम बनाऊं आपके लिए क्लोज लूप सिस्टम, इफ दिस इज योर G ऑफ S प्यारे बच्चों एंड दिस इज योर H ऑफ S, then what you will say कि sir here plus minus here R of S, here C of S. So student, in the closed loop transfer function, the manufacturer should be more rigid about the significant or about the we can say that जो भी इसका about the specification of HS as compared to specification of GS. मतलब क्यों ऐसा बोला मैंने? क्योंकि मेरा क्लोज लूप सिस्टम HS के रेस्पेक्ट में ज्यादा सेंसिटिव है एज कंपेयर टू GS. So closed loop system is more sensitive with respect to H of S as compared to GS. It means the manufacturer should be more rigid about the specification of HS as compared to GS. Is this clear, beta? So these are some standard results that you have to remember. OLTF, CLTF, okay, already we discussed. Now let's have a discussion of this very good question of engineering services. Examiner is asking here that we have to check the sensitivity of the transfer function TS to the variation in the parameter K. Okay, and after this question we will take a break of 10 minutes beta. So you will have your dinner. आप थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, पी लीजिए, थोड़ा सा एनर्जेटिक होकर वापस आइए. उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 और 3 की बात करते हैं. थोड़ा सा स्पीड अब हम बढ़ाएंगे. Okay. So what is its magnitude at omega equal to 5 and K equal to 1? ये सब निकालना है. तो first of all you need to tell me what is the overall transfer function TS. So you will reply transfer function TS is nothing but, क्या हम यहाँ short trick apply कर सकते हैं? बेटा reply करो ना बेटा, all of you. Can we apply short trick here? Because unity feedback system है. Then can we write n upon d plus n? बताया था starting में. And because these two boxes are in the cascade, so S plus 1 anyway cancel. So ultimate numerator is what? 25K. So I'm directly writing n upon d plus n, 25K upon S into S plus 5. ये ऐसा आपको गेट एग्जाम में करना पड़ेगा टाइम सेव करने के. And plus 25K. Plus 25K. So this is your overall transfer function. Now what you have to find, we need to find sensitivity. It means we need to apply this formula. T with respect to K. The formula will be K upon T and del T with respect to del K. And T is nothing but this overall transfer function. So I will do on the next slide. तो next slide पे मैं try करता हूँ, आप लोग भी बताइए जरा S T K. So shall we say that K upon overall transfer function क्या था T? K upon T बोला ना आपने? चलो मैं यहाँ वापस लिख देता हूँ. K upon T into del T upon del K. So what is T? T means transfer function. T means transfer function कितना है पूरा? ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू आया था 25K अपॉन, चेक कर लो, 25K अपॉन S इंटू S प्लस 5 प्लस 25K. कहाँ थे हम? ये रहा, S इंटू S प्लस 5 प्लस 25K. Is this clear बेटा? And here also we need to differentiate this. What? सर ये 25K अपॉन S इंटू S प्लस 5, S इंटू S प्लस 5 plus 25K with respect to K. Yes, sir. So can you please tell me, प्यारे बच्चों, K से K get cancel. So ultimately you will have in the numerator what? S into S plus 5, S into S plus 5 plus 25K upon 25 beta. Yes or no? And here student, when you will apply U by V form, so you will get what? S into, बोलो जरा फटाफट से. So यहाँ मिल जाएगा हमको S into S plus 5 plus 25K का whole square. This time this as it is and differentiation. So you should write S into S plus 5 plus 25K as it is
and the differentiation of 25k with respect to k, so you will get 25 only, and then minus sign, sir. Then this time we should write 25k as it is, and now student differentiate this denominator with respect to k, so s into s plus 5 का हो जाएगा k में 0, and here we are left with only 25. यहां तक अगर आप मेरे साथ हो तो जरा रिप्लाई कर दो CC in the chat box. If you guys with me till here, please do reply CC in the chat. अगर ध्यान से देखोगे ऑब्जर्वेशन, then this entire term will cancel with this power. Now student थोड़ा सा मैथमेटिक्स चाहेंगे आपसे, स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स. When you will multiply this 25 inside the bracket, तो ये 25 इधर भी आएगा, 25 के ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 25 यहाँ आके अल्टीमेट न्यूमरेटर विल बी 25 इंटू s plus 5 अपॉन ये बाहर भी 25, ये कैंसिल हो जाएगा 25 से 25, and here you will get s into s plus 5 plus 25k. बोलो प्यारे बच्चों क्या बोलते हो, yes or no? Yes, yes sir. So this is your final answer guys. ये आपका फाइनल आंसर आ गया, बट अब आपको क्या निकालना था इसमें? सर इसमें हमको मैग्नीट्यूड निकालना था ओमेगा 5 फॉर k1. ओके सर. So for the LTI system, to find the magnitude, first of all, in place of s, we need to put j omega. जब आप लिखोगे यहाँ s t k s equal to j omega, then you will have here j omega and j omega plus 5. बोलो जरा yes or no? And here also k तो 1 है, and here also when you will put j omega plus 5 plus 25. What is the omega value guys? When you will check the omega value, सर ओमेगा वैल्यू 5, के वैल्यू 1. ओके, ओमेगा वैल्यू 5 है प्यारे बच्चों. अच्छा 5 रखने से पहले ओपन द ब्रैकेट करो, तो जे जे, व्हाट इज जे जे? जे स्क्वायर मतलब माइनस, तो शैल वी राइट माइनस का ओमेगा स्क्वायर, जे स्क्वायर माइनस 1, माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 जे ओमेगा अपॉन हियर आल्सो माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 जे ओमेगा, सिंपली ओपन द ब्रैकेट ओनली 20. नाउ प्यारे बच्चों व्हेन यू विल पुट ओमेगा वैल्यू 5, सो ओमेगा वैल्यू 5 का स्क्वायर कितना हो गया? माइनस का 25, minus 25 plus 5 5 ja 25j upon here also when you will put 5 ka whole square, so minus 25 plus 25j and plus 25. So don't you think pyare bachcho 25 and 25 get cancelled? When I will take common 25, then should I get inside the bracket minus 1 plus j upon 25j. So 25 and 25 get cancelled. The final answer will be minus 1 plus j upon j. And finally, we need to take magnitude also. So what is the magnitude? Under root of real part square, imaginary part square, and under root of 1 here. The final answer should be root 2, मतलब 1.414. किसी स्टूडेंट का आया था क्या रूट 2? रूट 2 आया था क्या बेटा? yes or no? I hope रूट 2 आपको मिला होगा. yes, रूट 2 आ रहा है. क्या बात है यार, क्या बात है हर्षित, शाबाश. ओके प्यारे बच्चों, तो अभी हम एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं बेटा. आप लोग भी कुछ खा लीजिए, पी लीजिए, मैं भी कुछ डिनर कर लेता हूँ, एंड आफ्टर 10 मिनट वी विल मीट अगेन. ओके, सो वी आर हैविंग ए ब्रेक ऑफ 10 मिनट एंड विल मीट अगेन. ओके, मिलते हैं हम 10 मिनट के ब्रेक के बाद, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 2, टाइम डबल एनालिसिस को फटाफट से रिवाइज करेंगे विद सम गुड प्रॉब्लम्स. ओके, तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे और इसके साथ हम रिवाइज करेंगे. और अगर आपको लग रहा है कि सर पीवाईक्यूज भी कराओ, तो मैंने पहले ही बोला है कि पीवाईक्यूज का डेडिकेटेड सेशन आने वाला है. वो शेड्यूल मैंने कल की क्लास में बताया था, वो जाके नोट कर लो. तो ऐसे अपकमिंग सेशंस भी आने वाले हैं. कंट्रोल के बाद हमारा सिग्नल भी आएगा ना. कल शाम को वापस मिलेंगे.
हेलो एवरीवन, जस्ट कंफर्म ऑडियो एंड वीडियो प्यारे बच्चों, जस्ट कंफर्म ऑडियो एंड वीडियो. So let's start. Just I will save the PDF for you. Hello everyone, just confirm audio and video प्यारे बच्चों. Okay guys, so now let's start chapter number 2 guys, time domain analysis. Okay, so Harshit, all of you just confirm audio and video so that we can start the class. So student, if I talk about the time domain analysis, is divided into two parts, transient state as well as steady state analysis. Transient state analysis gives an indication about speed of the system. It means हमारा system fast है या slow है, that we can identify observing the transient response. If transient time is very less, then system is fast. System speed is definitely increasing. Okay, and similarly student, steady state response gives an indication about accuracy. So student, किसी भी response में how to identify कि which part of the response is representing transient and which part of the system response representing the steady state. So student, in the CT equation, if you will put t tends to infinity, then the transient response eventually becomes 0. Why? Because transient response does not exist at time t tends to infinity. So it means if we have the CT equation, output equation, in that CT equation, if I want to identify which part is representing transient and which part is representing steady state, how can I identify? I can put t tends to infinity in the CT equation. उस पूरी CT equation में से जो part after putting t tends to infinity, the part of the response which will become 0 is known as transient response, and the response which will remain exist after putting t tends to infinity, the response which will remain exist will known as steady state response. I hope this is crystal clear प्यारे बच्चों. Yes or no? एक थोड़ा सा 30 सेकंड का टाइम देंगे so that I can add the chapter number 2 PDF. होगा. I think audio is clear. Just wait for the next 30 seconds. या 1 मिनट का टाइम दीजिए. 1 मिनट के अंदर में PDF फॉर चैप्टर नंबर 2 का हम अपडेट कर देते हैं. सो स्टूडेंट, हम कोशिश करेंगे कल का क्लास इफ पॉसिबल विल स्टार्ट विथ एट 5 PM. ओके. Okay guys, so I think now audio video clear. So I think now audio video is crystal clear. एक बार फटाफट से कंफर्म कर देंगे प्यारे बच्चों.
So hello everyone. Hello everyone. So I think audio video clear beta. I think audio video clear. Hello everyone. So I think audio video clear beta. I think audio video clear. Gauri says that, sir. So where you will get the lecture PDF. So that I will update in the next lecture beta. I need to ask to the team. Okay. I need to ask to the team. और I think ये जो Telegram group है ना बेटा, I think in this so hello. So that I will update in the next lecture beta. I need to ask to the team. Okay. I need to ask to the team. अच्छा PDF ये जो आप Telegram group का लिंक दिया है, शायद मेरा आवाज रिपीट हो रहा है. आई थिंक अभी क्लियर है. Okay, you can just join the Telegram group. So we'll update in this Telegram group. Okay बेटा. So I think audio video clear है. Audio video एक बार audio के लिए confirm कर देंगे. Audio एकदम clear है क्या? Audio is clear. थोड़ा voice echo तो नहीं हो रहा. Audio clear. So student, as I told you, time domain analysis divided in two parts: time transient state and steady state analysis. Now student, the first topic is from which the examiner can make a question. जहाँ के chances कम है पर question बन सकता है वो है type and order. So what is the type and what is the order of a system? So student, to identify, to comment on the type, the number of OLTF, okay, the number of open loop poles lie at origin. If G of S representing OLTF, guys, if G of S representing the OLTF, then we can say that suppose that the transfer function is like this, 1 plus T1S upon S to the power P 1 plus TAS like this. So if P equal to 0, system is having type 0. If P equal to 1, system will be type 1 and so on. System will be type 1 and so on. If P equal to 4, the system will be type 4. So what we can say that the number of OLTF, this is open loop transfer function, OLTF. The number of open loop poles lie at origin decide the type of a system. Gauri, all of you do reply. The number of open loop poles lie at origin decide the type of a system. And if I wish to comment on the order, then the highest power of S in the denominator of a CLTF gives the order of a system. Okay, तो बड़ा आसान है. So all of you please tell me what is the type and order of this system. I am expecting this question from you because it is very easy. Because it is very easy, that is why I am expecting from you. Can you please try better? All of you please give your best. All of you just try to attempt this. All of you please try to attempt. All of you try to attempt this question. Just wait. Yes, guys. What is the type and order? What is the type and order of this system? So what is the general student will reply, they find the type and order if the transfer function of a unity negative feedback system. This is the transfer function which is having unity feedback system. It means the system will considered as a closed loop transfer function, and closed loop transfer function provide the information of order of a system, but it does not provide the type of a system. What is the biggest mistake in this question? Student can reply type 0 order 5. कुछ लोग क्या बोलेंगे टाइप 0 है ऑर्डर 5 है क्योंकि उनको पोल ओरिजिन पे नहीं मिल रहा, बट वो रॉन्ग हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर तो इसका 5 पक्का है बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन द डिनोमिनेटर ऑफ CLTF. दिस ट्रांसफर फंक्शन इज एक्चुअली behave as a CLTF.
So the highest power 5 in the denominator will working as a order. Now to comment on the OLTF from the CLTF, we need to apply n upon d plus n minus n. It means what is n? N is 3s plus 7. What is this entire d, sir? This entire d. और हमको माइनस क्या करना है? This entire d मतलब ये s to the power 5 plus 2s4 plus 9s cube plus 3s square plus 3s plus 7 minus we need to subtract what? 3s plus 7. So don't you think here 3s 7 get cancelled? And finally in the numerator as it is, that is 3s plus 7. In the denominator we have a scope to take common s square. So we are left with s cube plus 2s square plus 9s plus 3. It means if this is my OLTF, then you can say that the number of poles at origin decide the type. So what will be the type of this system? So you will reply type is 2 and order is 5. So type of this system is 2 and order of this system is 5. Type 2 order 5. Is this clear, beta? Type 2 order 5. Correct answer for this question is type 2 order 5. Now student, let's start the first order system, unit step response as well as the impulse response. So if we'll quickly recall the first order system, then student, for the standard first order system, okay, so let me, okay, चलो छोड़िए, डायरेक्ट ही बॉक्स बना देते हैं. So student, if I talk about the standard first order system, we are having here 1 upon Ts and here unity negative feedback system. So this is your standard first order system. All of you please tell me what is the type and order of this system. सर जब आप बोल ही रहे हो फर्स्ट ऑर्डर है तो डेफिनेटली इसका ऑर्डर तो कितना हो गया फर्स्ट. सो ऑर्डर विल बी 1 और आप बोल सकते हो इसका ऑर्डर तो 1 है. एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस सिस्टम इज आल्सो 1 because one open loop pole lie at origin. So this is 1. So what about the CLTF directly from the short trick n upon d plus n, so 1 upon ts plus 1, so 1 upon 1 plus ts. And where capital T is representing the time constant RC. Capital T is representing what? The time constant RC. Now what is the standard results that we have to remember? है ना, as we are just doing a revision, so मैं derivation वाला part यहाँ नहीं करने वाला हूँ. We will not do all the derivation हम class में करते हैं comprehensive course में. What is subjected to unit impulse response? We have to remember the direct result for the competition exam. So for the first order system, the unit impulse response equation is 1 upon capital T into e to the power minus t upon t. कभी कभी 1 upon t को constant को examiner k लिख देगा, यहाँ confuse नहीं होना है. This is the only equation that we have to remember. The very much important is unit step response, that is 1 minus e to the power minus t upon capital T into ut. Here also you can multiply even with ut. So where capital T is time constant, and this is the unit step response for the second order system is very much important, because from here we can find out the settling time, rise time, okay, and the delay time as well. So if I will make the curve, so this is your dot line representing the input, and this line is representing the output. Let me take different color of pen here. So this is your unit step response, guys. The time required for the response to reach 63% of the final value 0.632. अगर final value 1 है, then CT. Then this particular time period is known as time constant. The time required for the response to reach 98% of the final value is known as settling time, which is in general represented as a 4T. Okay, तो इसको आप बोल सकते हो 4T. यहाँ पे 98% of the final value, 98% of 0.98. The time required for the response to reach 95% of the final value is 3 time constant. Okay, तो अगर आप बोलोगे सर यहाँ 2T पे क्या होगा, तो it will be represent like 86%, around 86%. Here it will reach around 63.2%. The time at which the system response reaches to the 95% of the final value is known as 3 to 95% of the final. 0.95 means 0.98 like this. So student, in general settling time का जो formula है, it can be general 4T
or it can be 3T also. But for that 4T it means जब आपको 2% tolerance band दिया हो or 98% of the final value, or here 5% tolerance band or 95% of the final value. So this is nothing but the settling time formula. If you will calculate the rise time for the first order system, rise time is approximately equal to 2.1 something कुछ होता है 2.19 something. So 2.2 into time constant. What is the delay time? The time required for the response to reach 50% of the final value. Final value 1 है, 50% 0.5. So this is known as delay time. So these all expressions you should remember. Those all the formulas है ना for the first order system. All of you please do reply. बेटा यहाँ तक clear है क्या? Please do reply CC in the chat box अगर यहाँ तक की बात clear है तो. Now student अगर हम बात करें ये response में बोला था याद रखना है आप लोगों को. So for the impulse response, the equation is nothing but 1 upon capital T e to the power minus T by T. For the unit step response, it will be 1 minus e to the power minus T upon T. For the ramp response, it will be T minus ka capital T into 1 minus e to the power minus T upon T. So student, all the result you need to remember, because one time in the GATE exam, direct expression only asked. है ना? वो कैसा दिखा था क्वेश्चन गेट में? आपको दिखाते हैं, देखो ये ऐसा. तो बोलोगे सर impulse response means it should map with R. The unit step response means map through P, and ramp means small t minus capital T, 1 minus e to the power minus T. So for the competition examination point of view, we should remember the result as well. Is it clear बेटा? Now, अब बताओ time constant. मैंने आपको बताया था कि if the time, as I already told you, if the time constant decreases, प्यारे बच्चों, if the time constant decreases, then your system speed going to be increases. And if the time constant increases, then your speed going to be decreases. So अगर आप system को fast बनाना चाहते हो, if you want to make your system fast, then time constant must be less. बोलो प्यारे बच्चों, ये सुनो. Voice is clear? Voice is clear. Gauri, Harshit. Now tell me guys how to check. So to check the time constant, actually we are not looking for the numerator. Numerator can be any constant term, but in the denominator we should remember 1 plus Ts. Here it can be K also, no? 1 plus Ts. It can be K, P, K1, K2, whatever you want. So 1 plus Ts. T matlab the first coefficient should be 1, then the coefficient of S will be T time constant. So here time constant is 5, here time constant is 2, here time constant is 3, but here time constant is not 8. You need to take 3 outside the bracket. So it will be 1 by 3 upon 1 plus 8 by 3 into S. So here the time constant value is 8 by 3. Here is 3, 2 and 5. Now we are looking for which is the faster unit out of the system given below. Which of the system has the faster unit step response? तो जिसका time constant सबसे कम होगा उसका response faster होगा. Are you guys clear with this? Tell me yes or no. So it means what we can say that if the system is having the lowest, whichever is having the lowest time constant, option number B, which is having the lowest time constant is having the highest speed. Lowest time constant has highest speed. Yes or no? So lowest यहाँ 8 by 3 मतलब 2.66 आएगा, and here is 2. Is it clear बेटा? Easy question था, आसान. Now student, here also I am giving you a short trick. What is a short trick? This is very good question. ऐसा question gate में भी बन सकता है. ऐसा question gate में भी बन सकता है. Okay. So how to remember direct half standard form? Remember, याद रखेंगे ऐसे questions में. So if the first order system is represented by like this K upon S plus A, जैसा कि इस question में दिया है आपको, GS is K upon S plus A, and the input is unit step response, so 1 by S, then what will be the output? What will be the output CS? If RS is unit step response 1 by S. So after doing the derivation, ये हम class में पूरा इसको derive भी करते हैं. After the derivation, what we will get? We will get the final diagram like this. I will make the final small diagram here only. Small diagram. Let me draw like this. So how the diagram look like, guys? Here. This is your unit step response like this. So this final value is nothing but K by A. This is also known as DC gain of CLTF, K by A. Here, what is the DC gain of CLTF? K by A, final value.
And here student, the line which is very near to the unit step response when time is very near to 0. जब time 0 के पास था, then the unit step response is represented by a linear line. Then the unit step response is represented by a linear line. At वो जो linear line जा रहा है, उसका slope क्या बनेगा? Then that point will be 1 by a. तो उसका slope आता है k. So what is the slope of this line? अगर इस line का slope कोई पूछ ले आपसे, तो आप बोलोगे slope आएगा k by a upon 1 by a. So slope will be k. In this expression, in this expression. So what is 1 by a? 1 by a is time constant. Time constant. आप बोल दो यहाँ से time constant क्या है? तो a को बाहर निकालना पड़ेगा. Then only 1 by a will be the s coefficient, time constant. Is this clear, beta? Is this crystal clear? So for this particular question, examiner asking the k or a unknown value. So can we directly calculate this? So this should be equal to what? This should be equal to k by a, and this term should be equal to 1 by a. So if you know the standard result, now it is just the comparison question. So you can say that k by a is nothing but 5, first expression, and second expression is 1 by a is nothing but 0.1. So it means a is nothing but 1 upon 0.1 matlab 10. If a is 10, then k is nothing but 10 into a, that is 50. All of you guys please let me know. So k का a का वैल्यू आ जाएगा 10 और k का वैल्यू आ जाएगा 50. बड़ा ही आसान क्वेश्चन बन गया. Now student, if I talk about the dominant pole concept, so let's take a revision of this concept also. So if I talk about, if we are having the two poles like this, minus 10 and minus 1, then guys, which pole will be working as a dominant? The pole which is very near to the imaginary axis. Now tell me, what is the time constant actually? So if I talk about the time constant formula, it can also be minus ka 1 upon real part of pole. Real part of pole. So student, if you will find the time constant due to this pole, तो आपका time constant का formula पता है क्या आ जाएगा? Minus का 1 upon minus 1, real part तो minus 1 ही है, तो 1 second. Time constant आया यहाँ से 1 second. And what is the time constant due to this? T equal to minus का 1 upon real part of the pole minus 10. So you will reply T equal to 0.1. So now you can say that sir, the overall time constant is actually covered by this pole only. Because ये 1 second है, ये 0.1 second है. In the approximate analysis, we can neglect 0.1 second with respect to 1 second. So student, this pole is known as dominant pole. Dominant pole. And this pole is known as insignificant pole. Insignificant pole. मैं short में लिखता हूँ insignificant. This pole is also known as significant pole. So guys, insignificant pole is the best pole because it provides quick response to the system. Because इसका time constant तो 0.1 ही है, इसका time constant 1 है, तो majorly time कौन consume कर रहा है? Dominant pole. That is why we can neglect the insignificant pole in the approximate analysis. However, insignificant pole is the best pole because it provides quick response to the system because time constant 0.1, as well as it will provide more relative stability to a system. In the control system, we know that in the control system, because we are always talking about 𝐂𝐤𝐴 system, that is why it is a fundamental truth that whenever a single pole lie in the RHS, that will make the system unstable. In a control system, because we always talk about 𝐂𝐤𝐴 system, then for the stability, all the poles must be lie in LHS, left hand side of the S plane. Left hand side of the S plane. Are you getting my point? It means here both the poles are in the left hand side, but this pole is relatively more stable as compared to this pole. Because to make the unstable, this need to travel this distance and this need to travel this distance. Is it clear, beta? So always remember, insignificant pole can be neglected, but always in the time constant form. But always in the time constant form. So let me take example. Suppose that your transfer function, ये कुछ ऐसा था 1 upon s plus 1 and s plus 10. Now for this question, how many poles? So of course 2 poles, minus 1 and minus 10. So can you please tell me which pole is insignificant, which pole is insignificant and dominant? So student, one more important relation, insignificant pole upon dominant pole. If the ratio of this is greater than equal to 5,
then only we'll consider this pole as a insignificant and this pole as a dominant pole. हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा हमेशा? सपोज करो ट्रांसफर फंक्शन ऐसा था 1/s+1 and s+2. तो इस केस में तो आप -2 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना -1 के रेस्पेक्ट, बिकॉज इसका टाइम कांस्टेंट तो 1 सेकेंड है और इसका टाइम कांस्टेंट 0.5 सेकेंड है. 0.5 सेकेंड को वी कैन नॉट नेग्लेक्ट विद रेस्पेक्ट टू 1. तो यहाँ इनसिग्निफिकेंट और डोमिनेंट पोल नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि रिलेशन देखो, -2 पर -1 2 आ रहा है, जबकि आपको रिलेशन 5 से ज्यादा चाहिए. यहाँ हो रहा है क्या? -10 पर -1 -1 कट गया 10. So this relation satisfied, then only this pole is working as a insignificant and this pole is a dominant pole. So student, for this dominant pole concept, examiner can ask two type of question. First is, what is the approximate transfer function? What is the approximate transfer function? First question. And second question is, find out the approximate time constant by using the dominant pole concept. So ये दोनों क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं? First of all, you need to check कि if I want to find approximate transfer function, then insignificant pole can always be neglected but always in the time constant form. Remember this. Insignificant pole को हम neglect तो कर सकते हैं, but वो किस form neglect करेंगे? It should always be neglected in the time constant form. तो बताओ time constant form में convert करने के लिए क्या करना होगा? 1/. So s+1 is as it is. Yes. You need to take 10 outside the bracket, so it will be 1/10. And it will be here 1 plus s/10. Now we can neglect this. So what will be the approximate transfer function? It is nothing but 0.1 upon s+1. This is nothing but the approximate transfer function. Now what is the ultimate time constant? The time constant is due to dominant pole, which is 1 second. So for this particular question, examiner can frame two type of question, and both the questions we have solved. So just do reply, Gauri, Harshit. Are you guys clear with this beta? Do reply fast. If you all guys clear, then do reply this question already we solved. Now this gate question, if you want to solve by using the concept of dominant pole, then you can say, tell me how many poles, how many zeros we have. So you will say that we have one real pole at -5 and we are having conjugate s² plus s plus 1. So you can write like this, s² plus s plus 1/4 plus 3/4 equal to 0. The first term will give you s plus half ka whole square. S plus half ka whole square plus 3/4 equal to 0. So from here s equal to, s is nothing but what? Tell me. Is it minus ka half plus minus ka j root 3/2? Tell me here, yes or no? So student, it means we are having a complex conjugate pole which is having the real part minus half. So don't you think here this pole is working as a insignificant pole? So examiner is asking the approximate transfer function using dominant pole concept. So we can neglect the insignificant pole, but it should be in the time constant form. मतलब आप डायरेक्ट s+5 को neglect नहीं कर सकते. We cannot directly neglect s+5. First we need to take outside 5. First we need to take outside 5. So once you will take outside, what you will get? So numerator 5 already. If I will take outside 5, then here it will be 1 plus s/5. And here it should be s² plus s plus 1. Then 5 and 5 get cancelled. So final answer. Now I can neglect this. The final expression is nothing but 1 upon s² plus s plus 1. Final answer will be 1 upon s² plus s plus 1, which is nothing but option number D for Delhi. Which is nothing but option number D for Delhi. Check कर लो आप. चलिए आगे चलते हैं फटाफट से. Now student, let's have a quick revision for the second order system is represented by omega d, omega n and zeta, where zeta is the damping ratio, omega d is the damped natural frequency, and omega n is the natural frequency or undamped natural frequency. So here student, what is the type? So of course type will be 1 because 1 pole at origin, and order of this system is 2 because second order system. For the second order standard form, always remember omega n square upon s² plus twice zeta omega ns plus omega n square. Okay? Yes sir. Okay. Now student, if I will write the characteristics equation of a second order system, then the second order system characteristics equation is nothing but second order system characteristics equation is nothing but s² plus twice zeta omega ns plus omega n square equal to 0.
This is the second order standard characteristics equation you have to remember. Now student, tell me if I will find the poles value here S1 S2, then I will get the pole value minus zeta omega n plus minus ka j omega n under root of 1 minus zeta square. So this is nothing but the pole equation. Now student, can we write here minus ka zeta omega n plus minus ka j omega d. So this entire expression is representing omega d. It means damped natural frequency omega d. Formula is nothing but omega n root of 1 minus zeta square. Remember this formula. S1, S2. And when you will plot these all the poles, when you will plot all the poles values for different values of zeta, so where we will get the poles and zeros, so you will see here. So in this equation, guys, which equation? We are having the equation S1, S2 equal to, sir, minus ka zeta omega n plus minus ka j omega n root of 1 minus zeta square. In this equation, if I will put zeta 0, then I will get undamped response and I will get the pole here. So at this point, my zeta value is 0 and at this point also zeta value 0. Pole value is nothing but minus ka j omega n. This value is also plus ka j omega n. Similarly, guys, if I will, so it will make a half circular shape actually. Will make a half circular shape. थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाया अगर यहाँ पे और यहाँ पे, so it will give you a half circular shape for the different values of zeta. So student, here somewhere we are getting the again pole. यहाँ पे भी और यहाँ पे pole मिलेगा. When the zeta value is greater than 0 less than 1. So this response is known as zeta equal to 0 means undamped response. This response is known as what? Undamped response. Similarly, guys, this response is known as underdamped response. Underdamped response. Here, student, when both the poles are repeated, so it is minus omega n, and at this point we are having zeta equal to 1, and which will make the system critically damped. And we are having the poles here and here. So you can say that zeta is greater than 1 over damped OD. So what will be the condition if poles are pure imaginary? If poles are pure imaginary, क्या हो गया प्यारे बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? What happened? Audio video clear, guys? Yes. Now tell me, guys, if I will talk about zeta 0, so here is what? So here also your zeta value 0 means the system is undamped, and this is sigma j omega s plane. Is it clear? So whenever poles are real repeated negative means critical damped. Whenever poles are complex conjugate means underdamped response. Whenever poles are real but different, overdamped. And whenever poles are pure imaginary, that means undamped response. So student, this curve already we completed. And this table, if I zeta equal to 0, poles will be pure imaginary. Poles will be pure imaginary. And the response will known as undamped response. The response is known as what? Undamped response. Here, student, poles are complex conjugate. Poles are complex conjugate. It means complex conjugate means it minus a plus minus ka jb, real also, imaginary also. And the system response is known as underdamped response. And this underdamped response is nothing but the most practical case. That only we'll discuss as a maximum P overshoot and all. Zeta equal to 1, then poles are real, negative, but same. Real plus repeated and negative. Real and repeated, guys. Real, repeated and negative. And system is known as critically damped. And here, student, we are having real poles but different. Real but different and negative. And the system is known as OD, overdamped response. Now, student, try to solve this question within 5 seconds for a second order differential equation.
if the damping ratio zeta is unity, अगर damping ratio zeta unity है, then of course the poles are equal, negative and real. Of course the poles are equal, negative and real. Is this clear beta? Unity है, then of course. Yes. Now student, next. So in this entire S-plane diagram, whenever any pole lie in the RHS region, that will make the system unstable. अभी पोल कहीं भी आ जाए, रियल पे, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पे कहीं भी आ जाए, सिस्टम अनस्टेबल होगा. If the pole is, if non-repeated pole exists on imaginary axis, will make the system marginally stable. और अगर repeated poles आ गया तो that will make the system unstable. अगर poles यहाँ है तो पूरा stable होगा. Now student, whenever poles are here, then it will represent undamped response. This will real pole है मतलब repeated या फिर non repeated. Repeated then critically damped and non repeated real means over damped. And if the poles are complex conjugate, then under damped response. Is this crystal clear beta? Yes. Now student, we should also know the simple standard result of sin theta cos theta. तो थोड़ा सा उसको भी हम recall कर लेते हैं फटाफट से. तो अगर उसको recall करेंगे तो कुछ, let me take a blank slide. So what is the cos theta here? You ना बनाऊं वापस मैं आप लोगों के लिए short diagram. If I will make a short diagram, guys, you can see here we have a complex conjugate pole here and here. So if this complex conjugate pole, if I will make a line like this, then you can say that the angle, अगर ये angle theta बनाता है, then complex conjugate pole, this part is minus zeta omega n, this part is j omega d. So student, if I will consider this as a triangle, then this distance is zeta omega n and this distance is omega d. बताओ यहाँ से cos theta क्या हो गया? The hypotenuse value is nothing but omega n. Omega n. So यहाँ से you can say that the cos theta is nothing but this upon this, zeta omega n upon omega n. So you will get zeta only. So very important relation. What is sin theta? So sin theta is nothing but perpendicular upon hypotenuse. So omega n as well. So if theta value going to be decreases, then your zeta value going to be increase. अगर theta का value increase होगा, that will decrease your damping ratio. That will decrease your damping ratio. Is this crystal clear, beta? Is this crystal clear? I hope. So now student, अगर आप ये देख रहे हो, अगर here, if this pole is shifting in this direction ना, then actually your theta value increases, and theta increases, hence less damping, because अब theta increase हुआ तो zeta decrease होगा. Yes or? If I will shift this pole in this direction, then of course my theta value decreases, and theta decreases, hence zeta value damping ratio increases. Are you getting my point, beta? Yes or no? अच्छा, for the second order system, we noted that the time constant system, थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया था, time constant is nothing but minus का 1 upon real part of pole. And we know that in the second order system, if I talk about underdamped response, then we are having the pole minus zeta omega n plus minus का j omega n root of 1 minus zeta square. So if I wish to write the time constant formula for this case, then your time constant is nothing but minus का 1 upon real part of the pole means minus का zeta omega n. Hence minus minus cancel. So your time constant is nothing but 1 upon zeta omega n. 1 upon zeta omega. So if zeta omega n value is decreasing, then time constant increasing. और time constant increase होगा तो speed कम हो जाएगा. Time constant. I hope you guys with me till here. I hope you all guys with me till here. एक बार रिप्लाई कर देंगे सभी लोग प्यारे बच्चों. यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? All of you guys clear with this? Now tell me guys, if I talk about the response, okay, unit impulse responses, unit step response. So one thing that you have to remember प्यारे बच्चों, for all the unit impulse response also for the step response, पर जो गेट के लिए important है unit step response, तो जो इक्वेशंस है, जो डायग्राम अगर हम याद रखें, तो फॉर द अनडैम्प्ड रेस्पॉन्स सीटी कर्व, तो हम एक बार कर्व को रिकॉल कर लेते हैं. तो सीटी, थोड़ा सा मैं डायग्राम अगर इससे बनाऊं, ऑल ऑफ यू, so we'll make the 4 diagram actually. Okay,
This is undamped response will make. Here we'll make underdamped response. Here we will make critical damped response. And here we'll make overdamped response. All are with CT with respect to T. So student, if I talk about undamped response, then we'll have the curve like this. For the undamped response, 1 minus cos omega nt. This is undamped when zeta 0. Undamped response. This is underdamped when zeta is greater than 0, less than 1. When zeta is greater than 0, less than 1, then we are having a curve like this. This is most practical case where we can observe transient and steady state. And here only we'll have the maximum peak overshoots. And when zeta equal to 1, critical damped CD. Critical damped CD, it means we are having a curve like this. And if I talk about the when zeta is greater than 1, that means we are having OD, overdamped response, and it means the curve is slightly like this. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? केवल थोड़ा सा इस तरह से है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लीनियर है. दिस इज OD. दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स फॉर द. सो अगर आप मैटलैब में चेक करोगे वेवफॉर्म्स को, तो यू कैन सी हियर व्हेन जीटा 0, तो देखो ये ऑस्किलेशंस वाला ये वाला अनडैम्प्ड. देन आफ्टर 0.1 से लेके 0.7 तक दिख रहा है आपको, ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स वाला ये. फिर जीटा इक्वल टू 1 पे एग्जैक्टली ये कर्व, जीटा इक्वल टू 1 एंड जीटा 2 मतलब OD वाला, थोड़ा ज़्यादा लीनियर हो गया ना ये. सर वीडियो बफरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा बफरिंग हो रही है क्या? अभी क्लियर है क्या बेटा? इज दिस क्लियर नाउ? आई थिंक नाउ क्लियर. थोड़ा सा बफर हुआ था बीच में, अभी क्लियर है शायद. एक बार रिप्लाई करो, एक बार रिप्लाई कर दो फटाफट से. इज इट क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर और नॉट? अभी तो क्लियर है ना? राइट नाउ वीडियो इज क्लियर. नाउ टेल मी गाइस, ऐसे क्वेश्चंस आपको गेट में मिल जाते हैं 1 मार्क्स में, जहां आपको केवल आइडेंटिफाई करना है. तो इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको. स्टूडेंट, व्हेनेवर इट इज नोटेड दैट द एस कोफिशिएंट, ओके, एस कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं. एस कोफिशिएंट जो है, अगर डायरेक्टली ट्वाइस ऑफ ओमेगा एन है, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा एन, देन द सिस्टम इज, देखो मैं यहाँ पे वही लिखूंगा एस कोफिशिएंट. अगर एस कोफिशिएंट ट्वाइस ओमेगा एन है कि इक्वल है, अगर एस कोफिशिएंट जो है वो ट्वाइस इसके इक्वल बनाते हैं यहाँ सिंबल. इफ एस कोफिशिएंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द ट्वाइस ओमेगा एन, तो ये हो गया आपका क्रिटिकल डैम्प. अगर आपका एस कोफिशिएंट, चलो वापस लिख देता हूँ, अगर आपका एस कोफिशिएंट इज लेस देन ट्वाइस ऑफ ओमेगा एन, तो होगा आपका अंडर डैम्प. ये अगेन शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगी शॉर्ट ट्रिक. अगेन अगर आपका एस कोफिशिएंट जो है वो ग्रेटर देन ट्वाइस ओमेगा एन है, तो वो पक्का OD होगा. और अगर एस कोफिशिएंट है ही नहीं, अगर एस कोफिशिएंट 0 है, एस कोफिशिएंट 0 है, तो क्या हो जाएगा? अनडैम्प्ड, जीटा 0 हो जाएगा उसका. ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे कैसे चेक करना है हमको. ओमेगा एन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे तो चलेगा, ओमेगा एन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू चलेगा हमको. ओमेगा एन का कितना है? देखो 15 है, मतलब 16 के पास है. 15 तो 16 के पास है, मतलब रूट 15 या रूट 16 क्या 4 के आसपास आएगा ओमेगा एन. तो ट्वाइस ओमेगा एन मतलब 4 टू जा 8 के आसपास आएगा. अगर एस कोफिशिएंट 8 के इक्वल होगा या इक्वल हुआ इसके, तो हम बोलेंगे या 8 से ज्यादा है या कम है, केवल ये देखो. तो आप बोलोगे सर ये तो 8 से कम लग रहा है. कम लग रहा है मतलब ये पक्का अंडर डैम्ड होगा, अंडर डैम्ड. अब बताओ ये 25 है, 5 का होल स्क्वायर 25 होता है, तो इसको कंपेयर करोगे एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर. ये तो है कन्वेंशनल अप्रोच. अगर आप कन्वेंशनल अप्रोच से करोगे तो भी कर सकते हो, बट टाइम लगेगा. बट अगर ये चीज याद रख लिया तो आप सेकंड में हवा में उड़ा दोगे. कैसे उड़ाएंगे सर? ओमेगा एन स्क्वायर 25 है तो ओमेगा एन 5 हो गया. इफ एस कोफिशिएंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा एन, व्हाट इज ओमेगा एन? 5 टू जा 10. देखो ना एस कोफिशिएंट क्या है? एस कोफिशिएंट 10. एस कोफिशिएंट 10 है व्हिच इज एग्जैक्टली इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा एन, मतलब क्रिटिकल डैम्प्ड. एंड यहाँ पे परफेक्ट होल स्क्वायर भी बन रहा है, एस प्लस 5 का होल स्क्वायर डायरेक्ट बन रहा है, तो क्रिटिकल डैम्प्ड. Here 35 which is near to 36, so omega n is nothing but near to 6. So what is twice omega n? 12 is nothing but delay time TD. Similarly guys, the time required for the response to achieve the second maximum peak is known as TP1. TP2 बोल दो उसको, TP1 बोल देते हैं.
The time required for the response to achieve first undershoot is TU1. The time required for the achieve second undershoot is TU2. अभी तो बफरिंग नहीं हो रहा है शायद, अभी बफरिंग नहीं हो रहा है, अभी क्लियर आई थी. So this is your CT with respect to T. Now guys tell me, if this is TP1, so TP1 formula is nothing but pi by omega d. TP2 formula is nothing but 3 pi by omega d. Similarly, TP3 formula is nothing but 5 pi by omega. Undershoot formula अगर आप बात करोगे तो first undershoot occur at 2 pi by omega d. Second undershoot is occurring at 4 pi by omega d. 4 pi. The maximum positive deviation of a response with respect to the final value is nothing but maximum peak overshoot MP1. The maximum positive deviation with respect to the final value is nothing but MP2, like this. The rise time formula is nothing but pi minus ka theta upon omega d. All these formulas you have to remember. Now student, if I talk about the very important maximum peak overshoot represent as MP, formula is e to the power minus zeta pi upon under root of 1 minus zeta square. In the form of percentage, if you wish to write, you can multiply with 100. So maximum peak overshoot MP formula, the very important point to notate, if zeta value is increases, then your MP value going to be decreases. Similarly, if zeta value is decrease, then your MP value going to be increase. In short, we can say that MP and zeta are reciprocal. So MP is inversely proportional to zeta, and we also know that zeta is inversely proportional to theta. It means अगर हम बोलें कि जीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा, then your theta going to be decrease and MP also going to decrease. If zeta value decrease, then theta increase and MP also increase. So shall we also say that कि MP and zeta is reciprocal, but MP and theta is proportional? Are you getting my point, beta? So these all are the important formulas that we need to remember. I think अभी buffering नहीं हो रहा है, अभी clear है. Now student, you can also remember this formula in terms of tan theta also. So if I will write percentage MP, it can be e to the power minus zeta, e to the power minus pi. Acha, root 1 minus zeta square upon zeta is nothing but tan theta. So can we write minus ka pi upon tan theta into 100? Or you can also write e to the power zeta upon, can we write cot theta e to the power minus pi into cot theta, 1 upon tan theta cot theta into 100. So like that also you can represent, because cos theta upon sin theta. Okay guys, and one more thing, agar is in this formula, if I will say that my zeta value 0, the moment when you will put zeta 0, you will get MP 100%. So maximum peak overshoot will be 100%. And when the zeta value is 1, 1 minus 1 0, something upon 0 infinity, e की power minus infinity 0, it means MP will be 0%. So shall we say that your maximum peak overshoot will be 100% अगर damping ratio zeta 0 है तो, and if damping ratio zeta 1 है, then MP will be 0. Clear? Now student, try to solve this question. तो अभी हमको शायद कुछ expressions पता है. अब student, first of all, exam, this is the MSQ first of all. This is nothing but a multiple select question, MSQ. Tell me student, if you wish to compare then e to the power minus zeta omega n. So shall we say that by comparing zeta omega n value is 1.2. Zeta omega n value 1.2 आ रहा है प्यारे बच्चों. And if you will compare the constant term, then e to the power root 1 minus zeta square कितना आया? So root of 1 minus zeta square is nothing but 0.8, sir. Is nothing but 0.8. Is nothing but 0.8. So calculate this beta. So once you will calculate, you should write 1 minus zeta square squaring both sides. So it will be 0.64. Bolo yes or no? So 1 minus 0.36 equal to zeta square. So zeta value is 0.6. Check करो एक बार. All of you guys getting the same or not? अब देखो कुछ क्वेश्चंस आपको पूछ रहा है, कौन कौन से क्वेश्चंस करेक्ट है हमको देखने. तो जीटा 0.6 आ गया. अब जीटा 0.6 आ गया. अब आप मेरे को बताओ ओमेगा एन निकाल सकते हो क्या यहाँ से? यस सर, ओमेगा. तो ओमेगा एन कितना आएगा? बोलो सर ओमेगा एन, जीटा ओमेगा एन 1.2 है. So if zeta is 0.6,
तो 0.6 का डबल है, तो ओमेगा एन का वैल्यू 2 हो गया सर। एंड इफ यू हैव ओमेगा एन एंड जीटा, कैन यू कमेंट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन? यस सर, कर सकते हैं। क्या क्या दिक्कत? एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0. So when you will put this value, what you will get? S square plus zeta value known है 0.6, omega n 2, so 1.2, 1.2 into 2, 2.4, so it will be 2.4 into S, omega n square 4 equal to 0. So 100% it is the characteristics equation. It means option number A तो पक्का correct है. And because it is a MSQ question, so more than one option can be correct. एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं इसमें, एक से ज्यादा ऑप्शन भी तो करेक्ट हो सकते हैं प्यारे बच्चों. यस और नो? Yes or no? Yes sir. So now tell me maximum peak overshoot. Now student, if zeta value 0.6 which is near to 0.59, तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे mp इक्वल टू e to the power minus zeta pi upon root of 1 minus zeta square. If it is equal to 0 point, is equal to what? mp. mp तो हमको निकालना है सर. जीटा का वैल्यू पता है ना? जीटा का वैल्यू कितना है? 0.6 है शायद, 0.6. So if you will put the value in this formula, if you will put the value zeta 0.6 ना, then you will get mp which is approximately 10%. मतलब ये 0.1 के आसपास आएगा, ये आएगा 10%. You can calculate, कैलकुलेशन का टाइम मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ. तो maximum peak overshoot 10%. This option is also correct guys. This option is also correct. अब ये आपको बोल रहा है कि डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बताओ यार डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी. ओमेगा डी इज नथिंग बट ओमेगा एन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर. तो ओमेगा एन कितना है? ओमेगा एन वैल्यू इज ट्वाइस सर, रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर. व्हाट इज जीटा? जीटा 0.6, सो इट इज 0.36. यस, इसको सॉल्व कर लो यार. 1 माइनस, सो ट्वाइस इनटू अंडर रूट ऑफ, इज इट 0.64? 0.64 का रूट कर लो बच्चों, 0.8. सो 1.6 के आसपास आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है सर, 100%. तो डैम्पिंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी 1.6 आ गया है. तो इसका मतलब यहाँ पे चारों ही देखो 1.04 निकालोगे ना आप. रेजोनेंट पीक भी पूछ लिया. रेजोनेंट पीक जो है वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम में पढ़ते हैं हम, और अभी से आपको फॉर्मूला बता दूं मैं. रेजोनेंट पीक है mr इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस जीटा रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर. एंड यहाँ पे अगर आप जीटा 0.6 रखोगे, व्हेन यू विल पुट 0.6 हियर, देन mr का जो वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.04 के आसपास आएगा. 1.04 के आसपास आएगा, नियर टू 1.04. इट मीन्स ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. MSQ था, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन था. इट वाज ए मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों. यस, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. सो गाइस टेल मी, ये क्वेश्चन है स्टेडी स्टेट एरर पे, उसको रिकॉल करके करते हैं. उससे पहले ये कर लेते हैं. ये क्वेश्चन बताइए जरा फटाफट से. ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन गाइस, ऑल ऑफ यू. सो अगर हम बात करें कि सर ये S1 है, ये 2J है, और ये जो एंगल आपको ये जो दिया है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू पोल S1, ये आपको 2√2 दिया है, 2√2 दिया. एंड दिस परपेंडिकुलर इज आल्सो 2. हाइपोटेनस गिवन है, तो क्या ये निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं सर. अच्छा मेरे को बताओ यहाँ थीटा कितना आएगा? थीटा तो बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस tan थीटा होता है. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बोलो यार, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस sin थीटा. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस sin थीटा इज नथिंग बट ट्वाइस अपॉन 2√2 आएगा. 2 कट जाएगा, 1/√2. 1/√2 मतलब थीटा 45 आ गया. एंड द मोमेंट व्हेन थीटा 45 डिग्री, थीटा इज 45 डिग्री, मतलब tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इट मींस tan 45 1 होता है. टू मेक इट 1 दिस डिस्टेंस शुड बी 2. ये भी 2 होना चाहिए, मतलब क्योंकि ये नेगेटिव रियल एक्सेस है, तो ये -2 होगा. तो आपको पूछ क्या रहा है? आपको पूछ रहा है मैक्सिमम पीक ओवरशूट. तो मेरे को बताओ डैम्पिंग रेशियो क्या होगा? सर डैम्पिंग रेशियो होता है cos थीटा इक्वल टू जीटा. cos थीटा इक्वल टू जीटा. एंड व्हाट इज जीटा? तो बोलोगे सर cos थीटा इक्वल टू जीटा. एंड जीटा cos थीटा का वैल्यू कितना था? सर cos थीटा 45 है, तो cos 45 कितना आ गया? cos 45 है 1/√2. सो 1/√2 इक्वल टू जीटा. इट मींस जीटा इज नथिंग बट 0.707. एंड स्टूडेंट ये टेबल भी आपको याद रखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन एग्जाम, कि जब भी जीटा का वैल्यू 0.4 के आसपास होगा, तो जो एमपी होगा वो नियर टू 25%. एंड व्हेनेवर जीटा वैल्यू इज 0.7 के नियर होगा, देन योर एमपी इज अप्रोक्सीमेटली 5%. इफ जीटा वैल्यू इज 0.5, then your MP is around 16%, and when जीटा is 0.6, then your MP is approximately 10%.
So these values directly we have to remember as far as competition exam is concerned. जहां तक competition exam की बात करें, बोलिए बफरिंग अभी भी हो रहा है क्या? अभी तो नहीं हो रहा है यार, अभी तो बफरिंग नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? नाउ टेल मी कि इफ मैक्सिमम पीक ओवरशूट ऑफ दिस सिस्टम इज, टेल मी गाइस व्हाट इज द जीटा वैल्यू 0.7. तो ओवरऑल एमपी अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आएगा? सर 0.7 है, इट मींस एमपी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5%. एमपी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5% बिकॉज जीटा एंड एमपी आर रेसिप्रोकल. Okay, so these are the standard results. If you are able to remember, then you can apply simple reasoning in the competition exam like GATE. Okay, चलिए यहाँ बताइए बच्चों. The second order system with the zero located, okay, poles are also located. Examiner asking. So student, whenever such type of questions where pole occur, हमेशा याद रखेंगे जीटा ओमेगा एन फाइंड करने के लिए we need to focus on pole. Where is the pole equation? -3 प्लस माइनस का 4j, -3 प्लस माइनस का 4j, -3 प्लस माइनस का 4j. So can you please apply simple trigonometry प्यारे बच्चों? If this is 3, this is 4, then this is 5. Simple Pythagoras. अगर ये नहीं आता इसका मतलब मैथ्स नहीं आता. ये 3 है, ये 4 है. This is 3, this is 4, then this is 5. And what is cos theta from this? So you will reply cos theta is nothing but 3 by 5. 3 by 5 is nothing but 6 by 10, 0.6. Cos theta is 6 by 10, 0.6. And if examiner is asking omega n, this hypotenuse value is itself omega n. So omega n is 5 and cos theta is 0.6. Correct answer D for Delhi. ऐसे आप हवा में क्वेश्चन कर सकते हो अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो. बताइए स्टूडेंट, अगेन इट कैन ऑल्सो बी एमएसक्यू इन द गेट, अगर गेट में आए तो. लेकिन क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया है तो आपको स्टेटमेंट बताना है कौन सा करेक्ट है. दिस इज नथिंग बट द यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम. एंड इक्वेशन लिखा है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 5t माइनस का 5t ई टू दी पावर माइनस का 5t. अब आपको केवल ये देखना है कि पोल कहाँ है. ई की पावर माइनस 5t मतलब ये आपको पोल देगा s+5 पे. s+5 आएगा इक्वेशन 1/s+5. पोल आएगा -5 पे और यहाँ भी पोल -5 मतलब दोनों पोल -5 पे हैं. बोथ द पोल्स अकर एट -5. तो बताओ फॉर द सेकंड ऑर्डर सिस्टम इफ बोथ द पोल्स अकर एट सेम वैल्यू -5, इट मींस बोथ द पोल्स आर नेगेटिव, रियल एंड रिपीटेड. इट मींस क्रिटिकल डैम्प्ड. It means for sure critical damped, and critical damped will make the zeta value 1. Critical damping ratio 1, zeta 1. Undamped natural frequency omega n equal to 5 because in the underdamped response this value is equal to omega n actually. Yes or no? ये वैल्यू, ये जो पोल का इक्वेशन होता है वो माइनस ओमेगा एन होता है. तो कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? ओमेगा एन का वैल्यू 5 रेडियन/सेकंड. And if this is unit step response, examiner asking what is the impulse response. So student, to find, अगर आपको impulse response find करना है and impulse step response is given, then you can differentiate. So when you will differentiate the step response, you will get the impulse response. The moment when you will differentiate, you will get here 0 and here minus minus plus 5 e to the power minus 5t. Here student again you can take common -5 and यहाँ पे करिए आप t को as it is, and here when you will divide you will write -5 e to the power minus 5t plus. Tell me guys what next? Next आप 5 को ऑलरेडी बाहर ले लीजिए और e to the power minus 5t. 5 को ऑलरेडी बाहर लिया हमने और e to the power minus 5t as it is और t का हो गया 1. अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 5 e to the power minus 5t माइनस माइनस प्लस 25, 5 5 25 t e to the power minus का 5t and minus का 5 e to the power minus 5t. Don't you think this term and this term get cancelled? The impulse response is nothing but 25t dot e to the power minus 5t, 25t dot e to the power minus 5t. It means 1 2 3 all the 1 2 3 statements are correct. सारे ही 1 2 3 हमारे correct थे. Is this clear बेटा? अब ठीक है सर. तरुण ने रिप्लाई किया यस सर. अब ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड. सभी लोग रिप्लाई करते चलिए. यहाँ तक की बात ठीक है. अच्छा ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. पीक टाइम, राइज टाइम, पीक ओवरशूट, एवरीथिंग. ओके. सेटलिंग टाइम. Settling time is nothing but 4 upon zeta omega n for the 2% tolerance band, and for the 5% tolerance band it will be 3 by zeta omega, 3 into t. Now student, can you solve this question within 5 seconds if you are listening?
गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग कृष्णा. कृष्णा, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड? केवल आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, कैन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली. Tell me guys. All of you just try to reply. Can you solve this question? जी सर, बताओ जरा. अरे यार स्टूडेंट, because it is a critical damped, sorry, because it is a under damped response, so zeta value is maximum peak overshoot आ रहा है ना. Maximum peak overshoot only valid for the under damped response. Sorry guys. Maximum peak overshoot is only valid for the under damped response. It means जीटा का वैल्यू पक्का 0 और 1 के बीच में होना चाहिए. ये नहीं है तो रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया. जीटा 0.414 ही आएगा. क्योंकि यहाँ ऑप्शन इतने आसान थे ना, क्योंकि यहाँ ऑप्शन इतने आसान थे कि 5 सेकंड में उड़ाया जा सकता था. अच्छा, अगर आप थोड़े से कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो ये क्वेश्चन करके बताओ, ये करके बताओ जरा, ये करके बताओ जरा, बताओ. ये अगर आपने कर लिया तो मैं मान जाऊंगा कि आपने रिवीजन अच्छे से किया है. जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट में सही कर लेगा, इसका मतलब समझ लो उसने कंट्रोल सिस्टम अच्छे से क्लासरूम में भी पढ़ा है और उसको रिवाइज भी किया है. बताइए जरा, ये क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे? ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट. एवरीवन जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. बताइए, आई एम वेटिंग फॉर यू. क्वेश्चन तो विजिबल है ना आपको? आई होप क्वेश्चन पार्ट इज विजिबल. टेल मी विच ऑप्शन करेक्ट. टेल मी गाइस विच ऑप्शन करेक्ट. चलो मैं आपको एक टाइमर लगा के देता हूँ. 30 सेकंड का टाइमर लगाते हैं. 30 सेकंड का टाइमर है. ट्राई टू सॉल्व दिस. ऑप्शन नंबर ए. क्या बात है यार कृष्णा, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड कृष्णा. एनी अदर स्टूडेंट? एनी अदर स्टूडेंट प्यारे बच्चों? बोलिए. So all of you guys tell me one thing. All of you guys just tell me one thing. कि sir here damping ratio zeta equal to 0.5. Now student, one thing that you need to observe कि sir whenever zeta 0.5, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, if zeta 0.5 then your MP is near to 16%. MP is near to 16% मतलब 0.16. Now what is the biggest mistake by the student? स्टूडेंट जनरली क्या मिस्टेक करेगा? बड़ा इनोसेंट स्टूडेंट, वो सोचेगा कि यहाँ डिफरेंस हमको 0.16 मेंटेन करना है, तो वो x का वैल्यू 2.16 कर देगा और वो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है और ये रॉन्ग है. इट विल गिव यू नेगेटिव मार्किंग प्यारे बच्चों. इट विल गिव यू नेगेटिव मार्किंग बिकॉज यू शुड बी क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम पीक ओवरशूट. सो मैक्सिमम पीक ओवरशूट इज नथिंग बट दिस CT max minus C infinity upon C infinity. It means you need to check कि MP is 16%. So what is the 16% of 2? अरे 2 का 16% क्या होता है? 2 का 16% क्या होगा चिन्मय? 2 का 16%. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग. सर 2 का 16% आता ही नहीं है सर, हमको आना चाहिए ना. 16 to the 30 to 0.32 आएगा. इट मीन्स ये डिफरेंस जो होना चाहिए ना 0.32 होना चाहिए. इट मीन्स यहाँ पे 2.32 आएगा. 2.32 मतलब CSK चेन्नई सुपर किंग. करेक्ट आंसर CSK है. CSK आना चाहिए. यस और नो गाइस?
और अगर देखना चाहे तो यहाँ पे ये होना चाहिए x माइनस टू, ये x माइनस अपॉन टू इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, ये कितना आना चाहिए, आप बोल रहे हो 16% आना चाहिए। अब आप लिखो यहाँ 2.32 माइनस टू अपॉन टू, तो अब ये आएगा 16% के। बात समझ में आई आप? करेक्ट आंसर आएगा चेन्नई। चलिए प्यारे बच्चों, ये बताइए जरा फटाफट से, ऑल ऑफ यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व, जस्ट चेक योर कॉन्सेप्ट, देखते हैं आप कितना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है आपके, देखते हैं आप। बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीटा हियर, ऑल ऑफ यू टेल मी। अच्छा पहले तो ये बता दो कि एमपी कितना है, अगर एमपी नहीं आया तो जीटा कहां से आएगा? एमपी और जीटा पूछ रहा हूं मैं आपसे। आई एम आस्किंग एमपी एंड डैम्पिंग रेशियो। ये शाबाश, वेरी गुड बेटा कृष्णा, रोबोटिक्स कृष्णा, वेरी गुड। अदर स्टूडेंट शुड आल्सो रिप्लाई, ऑल ऑफ यू गाइस शुड रिप्लाई ना। So everyone guys should reply. Shall we go for next or wait? सर बोलने का ऑप्शन दीजिए, कमेंट लेट आ रहा है। यूट्यूब में बोलने का ऑप्शन आता है क्या प्यारे बच्चों? मेरे को तो लगता है शायद यूट्यूब में नहीं आता है वो बोलने का ऑप्शन। कृष्णा, यूट्यूब पे तो आपको कमेंट लिखना पड़ेगा, थोड़ा लेट आता है, बट ठीक है, इसको ट्राई करो ना, क्या दिक्कत है। टेल मी बेटा, व्हाट इज एमपी? सो यू विल रिप्लाई एमपी इज नथिंग बट 3.75 minus 3 upon 3 into 100. How many of you are getting MP 25%? And if MP 25%, zeta is near to 0.4. जीटा इज नियर टू 0.4, डैम्पिंग रेशियो कितना अच्छा आसानी से निकाल सकते हो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वैल्यूज। क्लियर है बेटा? क्लियर। नाउ स्टूडेंट, इफ आई टॉक अबाउट इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, लिमिट t टेंड्स टू 0, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी SFS. Final value theorem can only be applicable if the poles of S of S should exist in the left hand side of the S plane. It means should not exist on RHS or should not exist on imaginary axis. Clear? अच्छा जरा इस पे फाइनल वैल्यू अप्लाई करके बताओ, ऑल ऑफ यू कैन यू अप्लाई फाइनल वैल्यू हियर? अब इसमें भी कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं, कितना आसान क्वेश्चन। लिमिट s टेंड्स टू 0 x of s, सो द मोमेंट व्हेन यू विल पुट आंसर 0 आएगा कि चेक करो। लिमिट s टेंड्स टू 0 s x of s होता है, फाइनल वैल्यू क्या होता है? फाइनल वैल्यू होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 s x of s। सो x of s को लिखने का नीड भी नहीं है, क्योंकि ये s जब s को 0 करोगे लिमिट, तो 0 इंटू समथिंग 0 कर देगा, आंसर 0 आएगा। क्या बोलो ये सब? आर यू ऑल गाइज एग्री विथ मी? करेक्ट आंसर इज 0 हियर। नाउ स्टूडेंट, इफ यू रिकॉल द स्टेडी स्टेट एरर कॉन्सेप्ट, द स्टेडी स्टेट एरर, द स्टेडी स्टेट एरर कॉन्सेप्ट अगर फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू। सो इफ दिस इज g of s गाइस एंड दिस इज h of s, यूनिटी फीडबैक, अगर हम यहाँ पे यूनिटी फीडबैक ले रहे हैं, hs को 1 ले रहे हैं, hs इज 1, चलो अगर यहाँ लेता हूँ मैं, इफ hs इज, दिस इज h of s. So some very important expressions that we have to remember. This is your y of s output, this is your r of s input. Student, always remember the error which will generate after this differencing point here, this error, this es will become steady state error if and only if hs will be 1. अगर ये hs, देखो अब यहाँ ध्यान से देखना, ये et इक्वल टू क्या चाहिए हमको चाहिए rt माइनस का, अगर मैं इसको आउटपुट को c ऑफ s बोलता हूँ, तो rt माइनस का c ऑफ t, सुनो cs अपॉन rs, या इसको y बोलना है तो y s बोल दो, y बोल दो, r बोल दो, जो बोलना है, तो rt माइनस का y ऑफ t। तो बताइए rt माइनस का y t कब आएगा? जब hs 1 हो जाएगा, ये सुनो। सो इफ यू विल टेक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देन यू विल रिप्लाई es is nothing but
R of S minus का Y of S. And when you will apply the final value theory here, final value theorem, you will get steady state error. So ESS is nothing but limit S tends to 0, limit S tends to 0, S into this entire E of S value. And when you will substitute this, you will get ESS is nothing but limit S tends to 0, S into ES is nothing but what? Bolo jara. Sir, ES is nothing but the difference of R of S minus C of S or Y of S bol do, output bol do. So what is the ultimate ESS? Steady state error formula is nothing but limit S tends to 0, S, and you will take common R of S, you will get 1 minus ka YS upon R of S, and which is actually nothing but closed loop transfer function. This is nothing but CLTF actually. So the final formula of the steady state error that you have to remember, limit S tends to 0, S into RS, whole bracket 1 minus CLTF. And this formula is very much important for the gate point of view. But sometime examiner will directly give you OLTF GS and unity feedback system. So whenever unity feedback system, मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे if this is HS equal to 1, then only it will give the unity, then only it will give the steady state error. So if HS is not equal to 1, then this error will be actuating error EA. Are you getting my point? तो यहाँ पे या तो EAS आएगा और यहाँ पे ES आएगा. Steady state error ES कब आएगा? When HS equal to 1. And this error will become actuating error EAS if your feedback is not equal to 1, non-unity feedback system. Remember this. Is it clear? Very important concept. Very much important concept. Very good बेटा कृष्णा. जीटा 0.4 बता दिया आपने. क्या बात है बेटा, क्या बात है. Very good, very good. So now student, if the unity state, if the HS equal to unity feedback system, then we can also write the steady state error in terms of Kp, Kv, Ka, and we should also remember the table. So student, here is R of S and here the output is Y of S. Then your steady state error formula ESS, in terms of GSHS, you can also say that it is limit S tends to 0, SRS upon 1 plus G of S and H of S. Now student, we can say that, sir, in this expression, if your HS equal to 1, then only this expression will give you steady state error. Then only it will give you steady state error. Otherwise, it will give the actuating ka steady state, actuating error. Actuating error. Limit S tends to 0, SRS upon 1 plus G of S, H of S. And in this expression, if your HS is not equal to 1. ये हम फाइनल कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर रहे हैं केवल, है ना. ये डेरिवेशन हम सब क्लास में करते हैं. ऑल द डेरिवेशन डिटेल डिस्कशन हमारा क्लास में होता है. ये टॉपिक 8 घंटे चलता है वहां पे. यहाँ थोड़ा सा हम फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये पूरा चैप्टर नंबर 2 को डिटेल में पढ़ते हैं. So what I want to tell you guys, you need to remember, as far as GATE exam is concerned, आप देखोगे लास्ट 20 ईयर में तो मैक्सिमम क्वेश्चन बना है यूनिटी फीडबैक सिस्टम्स. एंड इफ आई टॉक अबाउट द इंडियन लिटरेचर like BS Manke, है ना, Nagaratan Gopal, all the, as far as Indian books are concerned, according to them, only one formula for the steady state error, ESS equal to limit S tends to 0, SRS upon 1 plus GSHS. ये फॉर्मूला आप यूनिटी नॉन यूनिटी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द इंडियन बुक्स, इंडियन टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक. बट व्हेन यू विल रेफर द फॉरेन like normal and nice book or as well as 𝐂𝐚𝐭 book, then we will identify there is a different separate technique to find out the steady state error for a non-unity feedback system. Yes, Rishi. Yes, Rishi, I think you're asking practice. Beta, Rishi, here we are having complete revision in terms of concept and formulas, as well as some questions also we are solving here. Some good practice question also we are doing in this. And in coming day, we will have the discussion of PYQ series also. तो अब फ्यूचर में आप कंट्रोल सिस्टम का PYQs भी देखोगे,
Tomorrow also we will meet on the same channel and we will discuss the control system part 2. Day after tomorrow, that is 26 Jan Republic Day के दिन हम देखेंगे signals and system part 1. Okay? Okay बेटा ऋषि? Okay, चलिए. Now student, if you will write the steady state error in terms of this, in terms of table. So table also we should remember. Steady state error for the type 0 system, step input 1 upon 1 plus kp. For the ramp input infinity, infinity. For the type 1 system, step input 0, type 1 ramp input 1 by kV. Type 1 parabolic infinity, type 2 step response 0, type 2 ramp 0, but type 2 parabolic 1 by k. So student, here 1 1 1 ये सब क्यों लिया गया है? It is provided that कि input का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है. इट मीन्स अगर स्टेप रेस्पॉन्स है तो वो 1 बाई एस है, वो ए बाई एस नहीं है. अगर वो ए बाई एस होगा तो यहाँ पे भी ये ए अपॉन 1 प्लस के पी हो जाएगा. इज इट क्लियर? एंड दिस एंटायर फॉर्मूला के अंदर यहाँ पे एच एस, ये एच एस 1 है. अगर ये यूनिटी स्टेट, अगर ये यूनिटी फीडबैक है देन ओनली दिस इज स्टेडी स्टेट एरर. अगर इस एक्सप्रेशन में एच एस नॉन यूनिटी है तो ये पूरा टेबल एक्चुएटिंग एरर दे रहा होगा. इज इट क्लियर? First of all, sir, we are happy to see you in our GFG, but late आए हो आप लोग. यस 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 कृष्णा, लेट हो गए थोड़ा, कोई बात नहीं. चलो फाइनल फाइनल टच आप लोगों को थोड़ी प्रिपरेशन में हेल्प हो जाए, इसलिए ये सेशन हमने अभी रखे हैं लास्ट मोमेंट पे आपका प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए. ओके बेटा कृष्णा, थैंक यू. अच्छा एमएफटी पढ़ा हो, ओके ओके बेटा ओके. चंडीगढ़ से, अच्छा अच्छा. जाशू सर बोल रहे हो या जांगरा सर बोल रहे हो? आशू जांगरा सर. चलो मैं शायद समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, चलते हैं आगे की तरफ. ओके प्यारे बच्चों. सो नाउ स्टूडेंट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. कम ऑन. सो वी नो दैट कि फॉर द सिस्टम टाइप 1, बोलो टाइप 0 सिस्टम मतलब फर्स्ट रो टाइप 0 स्टेप रैम पैराबोलिक. सो रो में क्या था? टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 स्टेप रैम पैराबोलिक. फॉर द टाइप 0 सिस्टम स्टेप में था 1 अपॉन 1 प्लस केपी इन्फिनिटी इन्फिनिटी. फॉर टाइप 1 सिस्टम स्टेप में था 0, रैम्प में था 1 अपॉन केवी, पैराबोलिक में था इन्फिनिटी. फॉर द थर्ड रो टाइप 2 स्टेप में 0, रैम्प में 0 और वहां पे 1 बाई के पैराबोलिक. नाउ स्टूडेंट एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर कि द स्टेडी स्टेट एरर इज 0 फॉर द केस ऑफ यूनिट स्टेप इनपुट and 6 is for the unit ramp input. Then find the value of the parameter p. Now tell me guys, to make the system, अगर यहाँ बोल रहा है कि error with respect to ramp input 6 है, मतलब कुछ finite value है, it means 1 by kV finite है, it means the system should be type 1. And to make the system type 1, open loop poles lie at origin should be 1. अरे कितने ओपन लूप पोल? वही सर, वही आशु सर. ओके ओके, तो बताओ जरा, एस टू द पावर पी मतलब क्या? पी का वैल्यू 1 करना पड़ेगा टू मेक द सिस्टम टाइप 1. द नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स लाई एट ओरिजिन डिसाइड द टाइप ऑफ ए सिस्टम. बोला था थोड़ी देर पहले, द नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स लाई एट ओरिजिन डिसाइड द टाइप ऑफ ए सिस्टम. क्वेश्चन क्लियर? रंजन ने बोला है सर आपके फैन है सर, बहुत दिनों के बाद देखे हैं, अब मैं पीएचडी कर रहा हूँ. यस यस रजत, सही बोल रहे हो आप, बहुत दिनों के बाद हम दिख रहे हैं यूट्यूब पे. सॉरी सर, हम लोग नाम से ज़्यादा उनके फैन हैं. बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लेकिन आपकी फीलिंग को मैं समझ गया ना, है ना. यस यस यूट्यूब पे, करेक्ट है सर, करेक्ट. चलिए प्यारे बच्चों, तो अपनी फीलिंग को जरूर चैट बॉक्स में लिखिएगा. रंजन, रंजन भगत, है ना बेटा? अगर आप पढ़े हो पहले तो
यस यस यस। तो आइए बात कर लेते हैं। चलिए, वॉइस क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, ठीक। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो गया यहाँ? 1 हो गया आंसर। यस सर, 1 हो गया। आगे चलिए, ये बताइए जरा फटाफट से। Student, tell me this question. You need to solve, guys. All of you just try to solve this question fast. All of you guys just try to solve this question fast. Come on. जरा फटाफट से solve करिए. All of you just try to solve this question fast. Tomorrow we'll discuss about the root locus, then polar plot, Nyquist plot, Bode plot, compensator, controller, state variable. Okay. आज हम कोशिश करते हैं राउत अर्विच वाले पार्ट को भी थोड़ा सा आप फटाफट से रिप्लाई कर दें तो। Student, whenever unity feedback system is there, we need to comment on the two parameter. One is type of a system and second is input. If type is 1, input is ramp, then error is 1 upon kV. But the ramp input का magnitude अगर alpha दिया है, देखो alpha है, it means error is nothing but alpha upon kV. So what is kV, sir? Sir, kV is velocity error constant is nothing but limit s tends to 0 s into g of s. अभी लास्ट टेबल देखा आपने. So what is the kV value from here? kV value is nothing but, sir, limit s tends to 0 s into gs. gs value is nothing but k upon s into s plus 2. So this is cancel out. So kV value is nothing but k by 2. Don't you think kV value is k by 2, guys? And your steady state error is nothing but steady state error. ही आपको पूछ रहा है बस, और क्या पूछ रहा है? तो बताओ जरा यार, steady state error क्या हो जाएगा? सर ESS is nothing but alpha upon kV, और kV का वैल्यू है k by 2. तो क्या आंसर ट्वाइस अल्फा बाई k है क्या? क्या आंसर ट्वाइस अल्फा बाई k मतलब ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद? ऑप्शन नंबर ए आ गया क्या आंसर? ऑप्शन नंबर ए आ गया. शाबाश 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 सर. यस सर, सिग्नल सिस्टम का वो गजब सा ट्रिक, डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोल सिस्टम सब आप ही से सीखे हैं सर. थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच रजन फॉर योर लवली वर्ड्स. आपके दिए हुए ज्ञान से एमटेक कर पाए. आईआईटी इंदौर से सिर्फ ऑनलाइन क्लास किए थे आपके. ओके ओके, शाबाश बेटा शाबाश रंजन. चलिए, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर इन द चैट बॉक्स. थोड़ा सा टाइम निकाल के बेटा वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी फीलिंग को लिखिएगा, क्योंकि फ्यूचर के अंदर शायद लाइव चैट नहीं रहे, लेकिन कमेंट में अगर कुछ लिखा होगा तो बच्चे को मालूम चलेगा. फ्यूचर लर्नर्स कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई दैट हाउ मच इम्पोर्टेंट द लेक्चर कैन बी फॉर देम. सुनो, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है लेक्चर. तो अपने एक्सपीरियंस थोड़ा समय निकालिएगा और अपने फीलिंग को आप कमेंट में जरूर लिखिएगा. ओके, चलो बच्चों, तो चलते हैं आगे की तरफ. नेक्स्ट में बिल्कुल सही बोल रहे हैं, काफी दिनों बाद, इवन सालों बाद लंबे सेशंस में यूट्यूब पे ले रहा हूँ. चलिए बताइए जरा इसका आंसर क्या है. द यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स कंट्रोल सिस्टम, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज द ओपन लूप ट्रांसफर. बताओ व्हाट इज द टाइप ऑफ द सिस्टम? The type of the system is 1 and the input is step. So whenever unity feedback system is given, to comment on the steady state error, we need to observe only two parameters. One is type of a system and one is input of a system. What is the type? Type is 1 because one pole lie at origin. Input is what? Step input. So just try to remember the table. Type 1. Type 1 means second row. Step 1 means first column. Second row, first column. Second row, first column meet at 0. Correct answer directly 0. Option number A for Ahmedabad. Correct answer option number A for Jiran. सर काश आप लोग पहले आए होते तो हमारा और भी हेल्प हो जाता. यस बेटा, यस डेफिनेटली. बट अभी हम उसका तो कुछ कर नहीं पाएंगे. बट जब आए हैं तभी, क्या बोलते हैं उसको, जब जागो जब ही सवेरा. तो अभी आप लोगों के लिए आज सुबह मॉर्निंग में भी सेशन था डिजिटल का, कल वापस मॉर्निंग में होगा. तो आपको जैसा जैसा टाइम मिलता है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए सेशन को अटेंड करिए और कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते रहिए. ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि CLTF अगर गिवन हो, नॉन यूनिटी फीडबैक हो, तो क्या करेंगे. तो थोड़ी देर पहले ही हमने एक फॉर्मूला लिखा था अभी, द स्टेडी स्टेट एरर फॉर्मूला. अगर CLTF गिवन है डायरेक्टली, देन कैन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला. दिस इज अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल नाइस लिमिट s टेंड्स टू 0 SRS 1 माइनस का CLTF. दिस इज द
this is the normal nice formula for the steady state error in terms of CLTF given or non-unity feedback given. Or according to the nice approach, even we can convert to non-unity feedback to unity feedback also. And somehow this topic is controversial also, because we have seen that sometime 2014 में जो question आया था, because in the GATE exam ना we have a scope to challenge the answer key by using this fact. Is it clear? So this is the approach by using the normal nice approach. But if I talk about 𝐂𝐤𝐴 approach, which is more relevant, so steady state error for the non-unity feedback, you have to remember this formula, limit s tends to 0, SRS upon 1 upon KH minus का CLT. So what is the only difference between the normal nice approach and 𝐂𝐤 approach? Is this KH, where KH is where KH is nothing but the DC gain of H of S. The DC gain of H of S. It means it is nothing but limit S tends to 0, H of S, but the condition is we need to ignore poles and 0 at origin. We need to neglect pole and 0 at origin. Neglect pole 0 at origin. That is why मैंने लिखा है यहाँ DC gain हम ये करते हैं. So these are the two things that we need to remember. Detailed discussion हम करते हैं comprehensive course में, because ये एक revision session है, तो मैंने आपको formulas को फटाफट revise करवा दिया. Sir, we are regular sir of GFG. अच्छा, आप रेगुलर स्टूडेंट हो GFG के. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड कृष्णा, शाबाश. बताइए प्यारे बच्चों. सो अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा बच्चों चैप्टर नंबर 3, दैट इज राउथ सर्विस मेथड. आप बोलो तो अभी स्टार्ट कर दें, आप बोलो तो कल करें. बोलो. चलो कल ही करते हैं, फिर थोड़ा टाइम भी हो गया अभी 10:30. ओके गाइस, सो टुमारो वी विल मीट एट आई थिंक 5 o'clock. ट्राई करें कल थोड़ा 5 बजे मिलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टॉपिक काफ़ी रह गए हमारे. तो विल ट्राई टू कंप्लीट टुमारो सेशन एंड ट्राई टू स्टार्ट टुमारो सेशन एट 5 o'clock. आप लोग लिंक देख लीजिएगा लाइव में, और अकॉर्डिंगली यू कैन अटेंड द क्लास. ओके ओके प्यारे बच्चों. हाँ, सो फुल स्टेबिलिटी एनालिसिस चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे. राउथ सर्विस मेथड एंड रूट लोकस, देन पोलर प्लॉट, नाइक्यूज प्लॉट, बोडे प्लॉट, कॉम्पनसेटर कंट्रोलर, स्टेट वेरिएबल, है ना. सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं. वो भी कुछ सैंपल क्वेश्चंस देखेंगे, है ना. तो आइएगा कल सेशन में, डोंट मिस द सेशन. रिमाइंडर सेट कर लीजिए. और आज सेशन खत्म होने के बाद अगर ये वीडियो किसी भी स्टूडेंट तक पहुंचता है, एंड इफ़ यू ऑलरेडी अटेंडेड माय क्लासेस इन पास्ट, आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बच्चों. ठीक है, चलो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर प्यारे बच्चों. सर फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में डाउट है. बिल्कुल बेटा, बिल्कुल. कल की तारीख, कल हम बात करेंगे. ऋषि बेटा, तो अटेंड कीजिएगा कल आप क्लास, है ना. ओके बेटा, ठीक है. तो चलिए, बाय बाय प्यारे बच्चों. दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन. वी विल मीट टुमारो at 5 o'clock. Okay, and we'll continue the remaining topic of the control system. Okay, चलिए बच्चों. So that's all from today's class. Thank you, welcome, you are most welcome. Bye bye प्यारे बच्चों. That's all.